batch is, an integrated batch, a batch which is I would say totally focused on UPSC preparation, which is having a a single focus, that is to groom the students, that is to prepare the students to take UPSC examination, right? No other goal, no other objective, right? And when we prepare for this integrated course, when we prepare for UPSC, side by side, you are already getting prepared for APPSC examination also, because both the examination are having more or less, yes or no, more or less same syllabus, right? You have same pattern of examination and you have same syllabus. Okay, is this point clear? So this batch is our dream batch, right? This batch is our hope. Okay, this batch is one, right, one, I would say, one batch which is going to take us to the, right, take us to the next level, or you can say that will take us to the pinnacle, right? That would be the highest level of achievement we are going to have. Although earlier also, some of our students who prepared by themselves, we were not responsible for it, right? We never groomed them keeping in mind the requirement of UPSC. We just coached them, we just mentored them keeping in mind the requirement of APPSC examination. But by by self study, by I would say their own input, they were able to, right, they were able to clear UPSC examination, right? Some of the students, right? Well, there are few, 2, 3 only, right? This time I have decided that we'll have a dedicated batch, right? A year-round batch, okay? An integrated batch, a non-stop batch, just like the cycle of UPSC examination, starting from the preliminary test and ending with the final result after interview. Yes, are you getting my point? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, है ना? इसी के लिए हुए हैं ना? अच्छी बात है। तो क्या करते हैं हम लोग? टुडे वुड बी द वर्कशॉप सेशन, एंड इन दिस वर्कशॉप सेशन वी आर गोइंग टू focus on, we are going to give you an outline, a brief, right, a brief overview of the entire intention, the motive, the vision, okay, the, right, the approach which we are going to follow for this particular batch, and how we are going to ensure that we have good results. At least, right, at least 5-10 students every year we are hoping to get, right, get there in the final list, and that would be the biggest, right, biggest achievement for Arunachal Pradesh. That would be our, right, our tribute to the Arunachal society. Okay, you people becoming IAS officer, right, getting into all India services, central services, and you'd be serving your people, right? People across the country, not only Arunachal Pradesh, right? Okay, so this is the reason why we have, right, we have started this batch under the name called Sunrise Batch. Okay, so again I am welcoming you all to the dawn of a new era. Okay, this has been a long cherished dream for me, and, right, after a long time, with Almighty's blessing, I am able to execute it now. Okay, we announced this in April month itself, everyone knows. Okay, and we allowed others to copy it, right? But you know, I don't want to talk about those points, the failure point or the failed point, okay, because there is no point. So I would just say that everyone is free to copy, nah? But you should have a clear-cut vision, you should have a plan. Unless until you have a plan and vision, right, for a copy-paste job, you will not be able to succeed, right? We also copy. We copy from different sources, yes or no? We copy from different materials. We refer to variety of books, yes or no? But after copying it, we apply our mind, okay? Unless until you apply mind, you will not be able to understand the relevance of those things, because I'm not the repository of all the information in this world, right? I have to depend upon scholars. I have to depend upon research workers, yes or no? I have to depend upon variety of sources. But ultimately, after referring to all the sources, I would be the research worker now, right? And I would be taking those things which are relevant for my job, which are relevant for our mission. Okay, this is what we have, right, we have done. And keeping in mind that whole requirement of UPSC, we have drafted a plan, we have a clear cut vision, we have a clear cut schedule of the classes, we have systematic arrangement of all those papers one by one, right, one by one, so that
There is non-stop preparation without any break. We have the best of the team here, best of the people here, best of the mentors here, and they would be able to, right, they would be able to justify, they would be able to justify their job, they would be able to coach you in a better way, and hopefully will have better results. Okay, this is a two-way commitment, my friend, right? Only we cannot right, assure you your success, right? 80% of your success depends on yourself, right? We only give you guidance, we only give you a direction to move, right? We know how to deal with a particular situation, we can, right, we can tell you. But when it comes to real life situation, when it comes to prompt decision, you are the person who is responsible for it, right? You have to take a decision on a prompt basis, on a, right, on the, right, on the basis of your mental caliber, you would be taking a decision to solve a particular problem. Okay, right? So before I again become emotional and talk about this, let me talk about the, right, the clear cut, I would say the clear cut 4 point agenda of this workshop session. Okay, right? So let me write those briefly, those agenda, those points here, and then we'll open up one by one. Okay.
Okay, so uh, as I told you just now, that these are your four, right, 4 point, or you can say the four broad agenda we have for today's session. So this session can be viewed in four parts. Okay, there are four parts of this session. Part one that deals with the background and vision. Then we'll talk about the uh, SARVASYA's motto, journey of the institute. We'll talk about the reason why we have opted for UPSC course. Why now? Why here? Okay. I mean, mostly talking about the institute, right? And some a part of my journey also. Then part two that deals with the examination pattern, approach towards integrated preparation. Why we have why we have planned GS paper one. That means the first paper first. Okay. Why GS paper one now? Then supportive ecosystem. These are the things we should keep in mind. We'll have the we'll have the support directly from the uh, from our faculty members. So we'll have personalized mentorship, weekly MCQs test for PT, answer writing session for mains, and then the facility, the extra facility you need to, the ecosystem you need to have, a uninterrupted preparation. So we have the facility of study hall, refreshments, all those things, right? Now basic refreshments. Okay, that means your tea, coffee, water ना, ये सब रिफ्रेशमेंट में ये मत सोचना सर क्या रोज लंच वगैरह मिलेगा क्या, मिथुन मीट या कुछ इस तरह का, तो ये नहीं, ठीक है. Then part 3 will have a I would say we'll have a 10-15 minute session where I'm going to pick one topic, right? Pick one topic to demonstrate how we are going to prepare the topic in an integrated manner, and how that preparation will help us in meeting the demand of both PT examination as well as mains examination, because this is an integrated course, right? Where you are going to deal with the mains requirement as well as PT requirement. Okay. So for illustration, we'll have one subjective question from the topic, right? Maybe some of you have started developing interest. What would be the topic here? ना ऐसा लग रहा है किसी को मन में आ रहा है? ऐसा लग रहा है कोई क्या टॉपिक होगा? ठीक है, थोड़ा इंतजार करते हैं, है ना? इंतजार करते हैं, चलेगा. थोड़ा सा और मतलब इंटरेस्ट और बढ़ाते हैं. तो वन सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड देयर वुड बी 2 to 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट? ठीक है, उससे हम लोग देखेंगे कि कैसे एक टॉपिक को हम लोग दो तरीके से प्रिपरेशन करना है, जिसमें दो स्किल का जरूरत है. एक स्किल जो फैक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे, और दूसरा जो फाउंडेशन के ऊपर ध्यान दे, जो सब्जेक्ट का क्या सारे डायमेंशंस को कवर करे. ठीक है, यू आर एबल टू सी ऑल द डायनामिक्स ऑफ द टॉपिक, राइट? Okay, then only you would be able to meet the demand of main examination. Mains examination is bit tough, tough than PT examination. All the stages are very tough. No, it is not easy. तो ये हम लोग बात करेंगे. Then finally we'll have part 4 where Amritanshu sir will come in, right? So my role is till the till the part 3. Till part 3 I'll be elaborating on these 3 parts, and Amritanshu sir would be dealing with the 4th part. ठीक है? 4th part is basically related to your inquiries, course detail, schedule, ना, team members, ठीक है? और भी ब्ला ब्ला जो भी जानकारी आपको चाहिए, ठीक है? रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रोसेस, बेसिक चीज ना समझ में आ रहा, जो नॉर्मल हम लोग को जनरल क्वेरीज आते रहते हैं, उसके बेसिस पे ये सारा 4th पार्ट का वहां पे फोकस होगा. क्लियर? फाइन. नाउ कमिंग बैक टू पार्ट वन, द इमोशनल पार्ट. ओके, द इमोशनल पार्ट, राइट? Now, why this is emotional? As I told you just now in my beginning statement itself, because somewhere that is hitting my mind. That is there in the subconscious brain, and that always forces me to think and execute this plan. That always has kept me alive, right? I have not lost hope. Okay, so just I'll take you. I'll take you to the memory, right? The flashback memory. थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, ठीक है? So I started my journey here in 2010, right? And from then onwards, I have dedicated myself
only for APPSC preparation, right? And when I came in 2010 here, believe me, the level of awareness for preparation, the level of awareness among students or aspirants with respect to civil services or for civil services was very low, very low. I mean, we couldn't count number of people. Na? Kuch, kuch, those, right, those students who came from good family background, right? Those students whose, their parents were already, aware of this civil services examination. They were able to, right, prepare for this, right? But, thank God that, God had its own plan and I had to stay here, right? I had to stay here. And throughout, right, throughout my existence here, throughout my, life here, throughout my journey here, I just focused on this, right, this particular, uh, you know, this particular motive to create awareness among, right, among the student that they should have one option in their life, right? They should have one better option in their life. And what is that better option? The only, right, only, I would say the only employer in the state is the government, right? No other job. There is no, almost practically there is no private sector here, right? ठीक है? तो आपको एक प्रीमियर सर्विस के लिए तैयारी करना चाहिए. And this is the, right, this is the premier service of the state, okay? And this is one service where you get to know so many things, right? And in real, right, in real sense, you, right, you are able to serve your people, right? If you are, obviously, if your intentions are right, okay? If you have a ulterior motive, obviously you would be serving yourself, you would be serving your interest, not the, right, not your people, right? So this is what I did for, silently for so many years, right? And progressively, slowly, gradually, I saw a change, right? I saw a change. Then almost, I would say, around, right, around 2016-17, this idea came to my mind that I have achieved a lot in this particular field, right? I have got lot of recognition, lot of respect from my students here. I want to take this whole, right, whole journey to the next level, and the next level is UPSC, right? So in 2000, finally, after I would say lot of push and pull, right? Lot of push and pull, because I had to work in an ecosystem that was, full with negativity later on. I would not say that it was negative right from the beginning, right? But later on in the last part, in the last 2-3 years, it happened. Very, I would say, unfortunate. It was very unfortunate. It was ugly because nobody would leave an institution who, right, who himself has built that, na. कभी नहीं छोड़ेगा. 14 साल ऐसे बर्बाद तो नहीं करेगा, ठीक है? But there were many regions. I don't want to, enter into that because वो blame game करने का फायदा नहीं है. That is between me and that person. ना, I'll handle him. Okay. तो मेरा point ये है, I publicly announced, if you can recall, that is on the social media in the year 2023, right, about UPSC course, launching integrated UPSC course, that 1 year, right, 1 year full, right, full 1 year integrated foundation course for UPSC preparation. But again, that did not took off, right? फिर से वो नहीं चला, वही पुश पुल, right? मतलब डिफरेंट इंटेंशंस, ओके, मोटिव्स वर नॉट करेक्ट, ठीक है? मेरा मोटिव सही था, इसलिए भगवान ने मुझे दूसरा चांस दिया एंड आई स्टार्टेड सर्वस्या जर्नी, ठीक है? सर्वस्या का जर्नी शुरू होता है. और ये तो मेरा प्लान तो, मेरा तो बेबी अंदर दिमाग में चल ही रहा है ना. तो ऑलमाइटी ने मुझे एक बेबी भी दिया, रियल बेबी, बेबी गर्ल ना, और सर्वस्या भी दे दिया. और अब एक मेरा और बेबी है, वो है यूपीएससी, उसको मुझे चाहिए, ठीक है ना. दैट्स व्हाई वी अनाउंस दिस इन अप्रैल मंथ इटसेल्फ, वे वेल इन एडवांस, ठीक है ना. लगभग 2-3 महीना एडवांस में ही बता दिए, क्योंकि प्लान तो हो गया, ठीक है. केवल अनाउंसमेंट नहीं करना है. अनलेस एंड अंटिल वी हैव, राइट, वी हैव ए सॉलिड प्लान, वी हैव ए फुल प्रूफ प्लान, वी कैन नॉट मेक अनाउंसमेंट ना. हमने अनाउंसमेंट कर दिया एंड देन वी लॉन्च दिस, एंड टुडे इज द ऑस्पिशियस डे, वी आर बिगिनिंग आवर जर्नी, ठीक है. समझ में आ रहा है? थोड़ा इमोशनल हो रहा हूं मैं, लेकिन हाँ, यस, हाँ, नहीं नहीं, बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं. बोरिंग हो रहा होगा, ये बोरिंग हो रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ. ओ ओ ओ ओ, नहीं, आई थॉट कि यू हैड सम क्वेश्चन ना, दैट्स व्हाई. एनीवेज, मतलब बोरिंग है, किसी को किसका पर्सनल लाइफ में क्या इंटरेस्ट है ना. एनीवेज, बट माय लाइफ इज नॉट पर्सनल, राइट? माय लाइफ इज नॉट पर्सनल व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन ना.
तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, आई मीन ए बिट ऑफ इट। पूरा स्टोरी बताऊंगा तो कम से कम 5-7 दिन तो लगेगा, ठीक है, एक सीजन तो लगेगा वेब सीरीज का ना। तो चल देते हैं, छोड़ते हैं उसको। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जर्नी इमोशनल है, ठीक है, आप लोग का भी बहुत इमोशनल है, ठीक है। यू आर राइट, यू आर गोइंग टू बी द फ्लैग बियरर ऑफ दिस होल, राइट, दिस होल ड्रीम प्रोजेक्ट, ठीक है। आप लोग इसके फ्लैग बियरर होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली, राइट, ऑब्वियसली any project, any mission comes to a success only when we work as a team, right? When we have a collaborative, right, a collaborative arrangement, when we have a supportive, right, supportive ecosystem, when we work in a, right, in a sync, जब हम लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं, ठीक है, और वो बहुत जरूरी है। मतलब इट इज नॉट इजी माय फ्रेंड, आई मीन टेकिंग एडमिशन, गेटिंग registration, very easy na, you can have money, you can ask your parent, obviously they will do anything na, anything for you, right, and you will take admission. But if you are not sure, if you don't want this journey, if you are not prepared for hardship, if you are not prepared to work hard, this is not your cup of tea, this is not your, I mean, this is not the right place for you. Don't waste your time, don't say don't come here, right, unless until you are determined that yes you want it, right, yes I'll get it, okay. अगर खुद पे ही श्योर नहीं है, अगर खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं, तो मैं तो पास नहीं करा पाऊंगा आपको। बात समझ में आ रहा है? तो पहले आपको चेक क्या करना है, कुछ चेक करना है आपको, मतलब सेल्फ चेकिंग, इंट्रोस्पेक्शन करना है, ठीक है। आस्क योर सेल्फ whether you want to join this journey or not, right, because this journey is going to be a tiresome journey, right, a journey full with turbulence, a journey full with hardship, right, a journey with lot of ups and downs, okay. Be prepared for it, both mentally as well as physically, right. बहुत टफ है, बहुत टफ है, but bigger the sacrifice, higher the level of, higher the level of achievement, right. As we always say na, Rome was not built in a day, right, एक दिन में तो नहीं होगा, but taking those blocks, right blocks, putting them in right place will obviously build a superstructure. You'll have a superstructure. That is your final product, that is your final aim, that is the ultimate objective, okay. So you have to, right, you have to ask yourself, don't say don't, I mean, don't get driven by external motives, don't get driven by looking at the posters of those rank 1, rank 2, rank 3 of UPSC na, of UPSC result, because that motivation is going to be short lived, ठीक है, 2-4 दिन तक रहेगा। आपका बगल वाला एपीसीएस बन गया, बोला हमको भी बनना है इसका जैसा, बनना होगा, बट आपको उसका जैसा मरना भी पड़ेगा। जन्नत किसको मिलता है दोस्त, मोक्ष किसको मिलता है, हाउ यू गेट साल्वेशन, मोक्ष क्या है, अरे मोक्ष तो कुछ पता होगा, ठीक है। जन्नत उसी को मिलेगा जो मरेगा, ठीक है। तो इफ यू वांट टू डाई, इफ यू आर रेडी टू डाई, ऑब्वियसली you'll get a place in the heaven, right, ठीक है। इसके लिए पहले तैयार हो जाना है, इसलिए जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। You don't be in hurry, right, take a calculated, thoughtful decision, a very, I would say, what to say, a decision based on all the pros and cons, ठीक है। Are you ready for this long journey, a year long journey? जनरली नहीं होता। आप बोलेंगे सर आपको 15 साल क्यों लग गए, इसलिए क्योंकि मैंने 2012 में भी ट्राई किया, और क्या हुआ आपको तो मालूम हो, इन एपीपीएससी जीएस प्रीलिम्स बैच और इन मेंस मॉड्यूल बैच, विच इज ऑफ 3 मंथ्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स ड्यूरेशन ना, GS-1 का मैक्सिमम 3 मंथ्स, और एपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस भी लगभग 3 मंथ्स का होता है। 3 महीने में भी अटेंडेंस कभी भी रेगुलर नहीं होता, ठीक है। शुरू का 5-6 दिन तो हाँ नया कोई आदमी दिख रहा था, चलो हम लोग क्लास जाएगा, उसको देखेगा, फिर उसके बाद 5-7 दिन 10 दिन बीता, फिर गायब गायब, ये नहीं चलेगा, because you would be wasting your time, you would be wasting your energy, you would be wasting the hope of your parents, you would be wasting their money, the hard earned money, right. बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, तो you have to be cautious, you have to be, right, you have to be thoughtful, you should be, right, you should be, you know, you should have that presence of mind whether you want this or not, आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है।
इसके बारे में जरूर सोचिएगा। इसलिए मैंने आज का वर्कशॉप रखा है, एंड द रेगुलर क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 20th, दैट मीन्स डे आफ्टर टुमारो। आई एम गिविंग यू 1 डे ब्रेक, ठीक है? थिंक अबाउट दिस, थिंक प्रॉपरली, थिंक फ्रॉम ऑल एंगल्स, ठीक है? और एक बार तैयार हो गए, वॉरियर रेडी है सर, हम लोग रेडी है मरने के लिए, बस वेलकम टू दिस जर्नी ऑफ डेथ। हाँ, एंड डेथ से क्या मिलेगा? साल्वेशन। साल्वेशन से क्या मिलेगा मालूम है? तो इफ यू वांट टू रिमेन राइट, इफ यू वांट योर नेम टू बी इटर्नल, इफ यू वांट राइट, इफ यू वांट people to recognize you, right, even after you leave this world, for that you have to achieve something, right? You have to do something which is outstanding, which is for the social good, which has uplifted their life, which has made a difference in their life, yes or no? Then only people will remember you. आप करोड़पति अरबपति है, कोई आपको याद नहीं रखेगा। बहुत पावरफुल है, डर रहे लोग, लेकिन मरने के बाद क्या बोलेंगे? अच्छा हुआ मर गया जल्दी, बहुत परेशान करता था ना। बट इफ यू हैव डन सम गुड वर्क फॉर योर पीपल, योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ना, उनका लाइफ में डिफरेंस लाया है, तो जनरेशन जनरेशन तक आपको याद रखा जाएगा और नाम ही रह जाता है, ठीक है? और कुछ नहीं रहता, ठीक है? वी ऑल हैव टू लीव दिस वर्ल्ड वन डे ना, बस नाम रह जाएगा, और वो नाम आपके कितने जनरेशन तक चलेगा। यस, तो दिस इज द रीजन व्हाई, आई मीन आई, अगर मैं कट कर रहा हूँ इसको, मैं ज्यादा बोलूंगा तो ठीक नहीं है, बहुत है इतना, ठीक है? तो दिस पार्ट you should know कि why, right, why I thought about this. Now coming to UPSC, why UPSC? क्यों UPSC के लिए? Because in last 15 years, one thing which I observed, and you all know this, now that is a public fact, that is, that is an open secret, everyone knows. Now, APPSC examination has never been, right, never been free from controversies. ठीक है? You won't believe, from 2013 to 2016, right, we had that issue of paper leak, right? Almost 3 years were wasted, ठीक है? होता है नहीं? Precious 3 years, my friend. And you know that upper age limit is fixed, हाँ या ना? Your level of energy is decreasing day by day. The propulsion is going down, हाँ? डिके हो रहा है ना, जैसे जैसे हम आगे समय निकल रहे हैं। तो यूथ स्टेज में हम हैं और मेरा 4 साल बर्बाद हो गया, क्या होगा फिर? Will not have the same level of energy, will not have the same level of resilience, ना? वो कैपेसिटी नहीं रहता। तो इसके लिए क्या चाहिए? We need one, right, one target which has no wavering nature, a target which is fixed. UPSC examination, a fixed calendar. You get the calendar in advance. You know when you are going to take examination. You know when you have to, right, when you have to take PT, mains, interview. Everything is scheduled, right, in advance. But do we have any guarantee for state PCS? मुश्किल है ना, ठीक है? उस पेपर लीक 4 साल में, SIT was formed, and I was also, and I was also questioned. Lot of grilling was done because some of those questions were directly reflected in the mains paper. और सब बोले कि आपका ही लीक किया हुआ है ना। फेसबुक में भी बहुत लोग चलाते रहे ना, तो मैं तो फेसबुक नहीं देखता हूँ क्योंकि सबसे फालतू चीज है वो ना। तो पता चलता है कोई स्टूडेंट बता देते ऐसा उस टाइम पे, बट व्हाट हैपेंड, एवरीवन नो कि किसका फॉल्ट है ना। It was Commission's fault, right? It was the failure. It was the failure of the human, right? The human, I would say, failure of the human arrangement. जो आपका setup है ना, that is the failure of the system, right? That was a human error. फिर recent क्या हुआ वो भी आपको पता है, ठीक है कि नहीं? 2020, you know what happened? Controversy हमेशा रहता है। So this is the reason why I want, right? I want security for my students. Security of your preparation. आपने प्रिपरेशन तो कर लिया, यू आर, आई मीन, यू प्ले वेरी वेल ना, यू आर, आई मीन, यू आर बेटर देन रोनाल्डो, आप रोनाल्डो से भी अच्छा खेलता है, लेकिन मैच ही नहीं हो रहा है, मैच को कॉल ऑफ कर दिया। अगला साल होगा, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। और अगर आप रोनाल्डो है, बॉल है हाथ में, तो बॉल लेके जा रहे गोल पोस्ट में करने वाले, पता चला गोल पोस्ट ही हटा दिया, कुछ भी हो सकता है। दीज आर द डिफिकल्टी वी फेस हियर ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? वी नीड सिक्योरिटी, वी नीड ए सेफ, राइट, ए सेफ ऑप्शन, एंड दिस इज योर
safe option, right? And don't worry if you are homesick ना, अगर आपको अरुणाचल में ही रहने का मन है, हमको यहीं रहना है ना, तो भी बात नहीं है, because you are having the same pattern, same syllabus, you can take APPSC examination also whenever the notifications come, ठीक है? तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था मेरा जो मैं सोचता था, और फाइनली विद गॉड ग्रेस, आई मीन भगवान का बहुत शुक्रिया मनाता हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल कि ये आज हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है? नाउ व्हाई नाउ, क्यों अभी? अभी करने का क्या फायदा? अभी करने का फायदा ये है कि यू वुड बी एबल टू टारगेट 2026 यूपीएससी प्रीलिम्स, राइट? यू वुड बी इन ए पोजीशन, you would be in a position to take your main examination, and you don't have to run here and there because you have already prepared the mains, right, main syllabus well, right, well in advance. You just have to keep it updating, you just have to, you just have to think over it, you just have to beautify that, you just have to bring new things, make it more interesting, you have to innovate, that's it, right? Your foundation is already laid, है ना? ऐसा तो नहीं होगा ना कि पीटी एग्जामिनेशन दे दिया और गलती से हो गया ना, गलती से हो गया फिर बोला ये तो गलत हो गया. Why? Because I'm not prepared for mains. Yes, but if you are prepared for mains, you have done all those preparation, you have covered all those papers, you have prepared all those papers, सब कुछ आपने पढ़ लिया है, तो आपको डरने का बात नहीं है, ठीक है? You have every chance, मैंने फिर से बोला, you have every chance to qualify the examination, ठीक है? इसीलिए हम लोगों ने अभी सोचा कि बस अभी से शुरू करना है, एंड वी हैव ए क्लियर कट शेड्यूल. आप यूल हैव, अमितांशु सबको मिला है? हाँ, तो यूल हैव द हार्ड कॉपी, मेरे ख्याल से सबके पास हार्ड कॉपी है. यू कैन सी द शेड्यूल, हमारा शेड्यूल फिक्स है, ठीक है ना? 2026 यूपीएससी 2027 में, मतलब 2027 में हम लोग फाइनली मिलेंगे. आप लोग में से, मेरे ख्याल से बहुत लोग आप लोग में से ऐसा होंगे जो 2027 में हम लोग मिले 2027. फॉर व्हाट? फॉर सेलिब्रेटिंग आवर सक्सेस. आप बोले सर इतना मत चढ़ाओ हम लोग को, तो हम लोग को तो खुद पे ही विश्वास नहीं है कि हम लोग बंदर देवा भी क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा ना. तो ऐसा नहीं है दोस्त, सोच लेंगे तो जरूर होगा, ठीक है? अगर आपने डिटरमाइंड हो गए, इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी. और हम लोग तो यार, मतलब जो जो ऐसे लिविंग क्रिएचर्स है जिनका पास सोचने समझने का ताकत नहीं है, उनसे तो बेटर है ना. हमारे पास सोचने समझने का, वो लोग जब 100 टाइम्स ट्राई कर सकते, तो हम लोग तो 1000 टाइम्स करना चाहिए, ठीक है? 1000 टाइम्स कैसा होता है? एवरी डे यू आर ना, आप पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, योर प्रिपरेशन इज डिरेल्ड, अगेन यू आर ट्राइंग टू कम बैक, अगेन यू आर ट्राइंग टू कम बैक, ठीक है? रिपीट 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 करते रहना, ठीक है? गाड़ी बंद हो गया, रीस्टार्ट. आपने तो मूवी देखा होगा ना, सब लोगों ने देखा है. अरे देख के एक दिन बहुत रोया सब लोग, बहुत अपना, बहुत इमोशनल हुआ, और दूसरे दिन सब लोग एनसीईआरटी और पूरा किताब खरीद के लेके आए. उसके बाद फिर से इग्निशन स्टॉप. फायदा क्या है, ठीक है? तो ये रीस्टार्ट चलते रहेगा, स्टॉप होता रहेगा. आपका काम क्या है? ट्राइंग टू कम बैक, ट्राइंग टू कम बैक, राइट, मेकिंग दैट कम बैक ना. इसी को तो इसी को तो इंसान बोलते हैं ना, ठीक है? दूसरा कोई हार सकता है, हम लोग नहीं हार सकते अनलेस अंटिल आपने हार मान लिया. अगर आपने हार मान लिया तो आपको कोई जिता नहीं सकता, और आपने अगर हार नहीं माना तो आपको कोई हरा नहीं सकता. इस बात को सोच लेना, ठीक है? मैं थोड़ा हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग, खास करके अमितांशु सर हमको बोलते हैं आप बहुत इंग्लिश बोलते हैं, हाई फाई मत बोलिए, ठीक है? तो हम बोले ठीक है, देखेंगे, कोशिश करेंगे भोजपुरी भी बोलेंगे, ठीक है? तो ये मेरा सिर्फ कहना है कि ये हम लोग को समझ जाना चाहिए कि क्या प्लान है, ठीक है? Why we are starting now? Because we have a clear cut schedule for UPSC 2026 PT as well as मेंस, ठीक है? और उसके बाद इंटरव्यू होगा, तो डोंट वरी, है ना? मॉक इंटरव्यू भी लूंगा, है ना? आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करूंगा. यस. एंड फिर हम लोग धौलपुर हाउस में मिलेंगे. धौलपुर हाउस कहाँ है? दिल्ली में, हाँ, इंडिया गेट के पास, जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा यूपीएससी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है? सपना तो देखना पड़ेगा दोस्त ना.
अगर सपना ही नहीं देखे तो फिर वो पूरा कैसे होगा? जैसे मैंने इतना साल से सपना देखा, आज पूरा करने जा रहा हूँ, मतलब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अचीवमेंट तो अभी टाइम लगेगा, रोज काम करना है ना, ठीक है। और फाइनल वो रियलाइजेशन तब होगा व्हेन यू पीपल विल कम आउट इन फ्लाइंग कलर्स, राइट। जब आपका सिलेक्शन होगा तब अचीवमेंट है वो, ना। लॉन्च करना, बैच चलाना, पढ़ाना, कोई मतलब नहीं, अनलेस अंटिल यू मेक द डिफरेंस, यू क्वालिफाई, ठीक है। कोई मैं पॉलिटिकल लीडर का जैसा तो नहीं बोल रहा हूँ ना, कि इतना मोटिवेट कर दिया कि जान देने के लिए तैयार है ना, नहीं वैसा नहीं। हाँ, जान देना है, लेकिन मैं बोलूंगा कब मरना है, ठीक है। आप खुद से नहीं, गाड़ी का ड्राइवर मैं हूँ और आपको मुझे ही फॉलो करना है, ठीक है। इफ यू वांट टू बिकम ए लीडर, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू बी ए बेटर फॉलोअर, ठीक है। लीडर तभी बनेंगे, तो अभी आपका क्या होगा, ग्रूमिंग होगा, कंडीशनिंग होगा, उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। रोज आपका परेशान किया जाएगा, आपको रोज ह्यूमिलिएट भी कभी कभी किया जा सकता है, बिकॉज इफ यू डोंट वर्क ऑब्वियसली आई विल ह्यूमिलिएट ऑल्सो ना, क्योंकि किसी तरह से मुझे वापस चाहिए, ठीक है। यू हैव टू कम बैक, ठीक है। आपको रास्ते में आना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर आई सेड वी आर हियर नाउ। व्हाई हियर? तो ठीक है, व्हाई हियर, बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ, right? And I believe in my colleagues. Amritanshu sir is here. ना, we have senior most faculty संजय सिंह sir, बहुत लोग हैं, ठीक है। And well, I know कि मतलब they have a dedication level which is unimaginable. हम लोग सोच भी नहीं सकते, इतना committed रहते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि we are going to give best, ठीक है। हम लोग अपना तरफ से तो बेस्ट देने वाले हैं, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और मेरा बारे में ज्यादा बोलने का फायदा नहीं, ठीक है। तो जो तो है ना। तो इसलिए इसलिए हमने इसको अभी प्लान किया और यहाँ पे आपके लिए प्लान किया। कमिंग टू पार्ट टू, एग्जामिनेशन पैटर्न एवरीवन नोस, सो आई डोंट हैव टू कमेंट मच ऑन दिस, राइट। You already know the scheme of examination in UPSC, just like APPSC, right? You have PT examination, which has two paper. You already know that, right? GS paper, CSAT paper, ठीक है। आपको क्या करना होता है मालूम है, ठीक है। CSAT paper is a qualifying paper where you have to secure minimum 33% marks, okay? And based upon your performance in GS paper, depending upon the cutoff, right? Cutoff marks, you would be qualified for the main examination, ठीक है। Then come the subjective second stage, that is the subjective stage, or you can say subjective examination, we call it as main examination, which has a weightage of 70, right, 1750 marks, ठीक है। Where you have GS paper, right, 4 GS paper, you have 1 essay paper, you have 1 optional subject having 2 papers, yes, है ना। मैं brief दे रहा हूँ, मतलब you already have, तो I don't want to make the session boring, right। You have this all the details here ना, syllabus, structure, everything is given here। तो मुझे repetition लगेगा, तो that's why I'm skipping this part। तो आप इसको देख सकते हो कि what is the pattern। तो there are three stages, you can say three successive stages: PT, main and then interview, right। PT examination सबको पता है, that is a qualifying examination, the whole examination is qualifying, you're not going to get any marks for it, that means your marks won't be added in the merit making process, ठीक है। आपका जो पीटी का एग्जामिनेशन है जस्ट एक क्वालिफाइंग ग्रांड है, बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, आपको इसको क्वालिफाई करके मेंस देना है, राइट। एंड व्हेन यू टेक मेंस, योर परफॉर्मेंस इन मेंस प्लस योर परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू, बोथ वुड बी काउंटेड, एंड बेस्ड ऑन दैट मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। ये बेसिक बात आपको ध्यान रखना है, छोटा मोटा बात, उसका निटी ग्रिटी रूल्स, ये सब का ऊपर में बात कर सकते हैं। देयर आर मेनी, some of our students this time also they have qualified PT, UPSC PT examination, and once you qualify that you would be getting DF ना, DF भरने का आएगा, उसको उसमें भी आपको गाइड कर देंगे कैसे आपको DF भरना है। बहुत वॉल्यूमिनस होता है डॉक्यूमेंट, है ना। एंड देन यू हैव टू फिल all those details, then you would be taking mains examination, and based on the DF your interview would be held, ठीक है। वही DF के ऊपर आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। आपको दोबारा कुछ भरने की जरूरत नहीं होता है। स्टेट पीसेस में थोड़ा अलग हो जाता है, मेंस में वो भराते हैं और फिर से इंटरव्यू में भी एक फॉर्म भरा लेते हैं, ठीक है। आपका पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ये सब सारा चीज, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर एग्जाम पैटर्न, यू ऑलरेडी नो इट।
Coming to our approach towards this integrated preparation, ठीक है, कैसा preparation होगा? तो integrated preparation, when I say, that simply means keeping in mind the requirement for the PT as well as main examination. ये तो simple सा बात हो गया. But this integration or this integrated approach, has two dimensions. It has two dimensions, right? What are the two dimensions? Number one, vertical, and the other one is horizontal. ठीक है? Vertical and horizontal. That means none of the papers, right? None of the papers, when I say paper, that means essay, GS paper, optional paper, right? None of the papers and none of those subjects should be studied in isolation. Don't study any subject in isolation, right? Try to develop that yeah, that integration between the subjects and between the GS papers, right? Between your two papers of optional paper, that means your paper 1 and paper 2, right? बात समझ में आ रहा है? So when you do this, we call this as horizontal integration. For example, जैसे छोटा सा example लेना है, you have GS paper 1, you have GS paper 3, you have GS paper 2, ठीक है? A question was asked in 2023 in UPSC mains, right? In UPSC mains, and that question was regarding international relations. Okay, international relation. Now this question of international relation, the international relation as a subject falls under GS2. ठीक है, right? Falls under GS2, but the basic understanding of, I said, the basic understanding of that phenomena, the basic understanding of that, rule or the law that guides, right, that guides the relationship among nations related to open sea, right, that we studied where? We studied in GS paper 1. Okay, right? तो आधा नॉलेज से काम चलेगा नहीं, ठीक है? You studied hydrosphere here, you studied the significance of oceans here, not in GS paper 2. Significance of ocean has been integrated with maritime security. Maritime security is part of international affairs, international relations. बात समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Horizontal integration, right? Trying to integrate those paper as far as possible. जहां भी possible है उसको कोशिश करना है. तो we call it as horizontal. Vertical कैसा होगा? Within a paper. Like GS paper 1, you have many subjects. क्या क्या सब्जेक्ट है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी. दीज आर द ब्रॉड सब्जेक्ट्स जीएस पेपर 1 में, है ना? क्वेश्चन कैसे पूछते हैं यूपीएससी में? दे आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन इन आइसोलेशन. आई मीन ज्योग्राफी क्वेश्चन वुड नॉट बी प्योरली ज्योग्राफिकल, राइट? यू हैव क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री दैट इज नॉट प्योरली हिस्टोरिकल ना, क्योंकि एग्जामिनर क्या टेस्ट करना चाहता है? एग्जामिनर आपका वॉल्यूम ऑफ नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहा है. एग्जामिनर को क्या मतलब है? एग्जामिनर को ये पता लगाना है कि जो आपने इतना पोथा पढ़ा है, इतना वॉल्यूम मटेरियल का पढ़ा है, उसमें आपने निचोड़ क्या निकाला? what is your takeaway? Now what is your, I mean, what is the summary of those topics? Now what is the summary of the of those subjects or those topics which you have studied, and whether you have studied those subjects in isolation or you have studied in a integrated manner. History cannot be studied in isolation unless until you have a proper understanding of geographical factors, right? You will not be having a better understanding of history. The historical events are product of geographical factors. आपने तो सुना होगा ना, फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़, अकबर को कितना टाइम लगा? हाँ, क्यों? Geographical factor. Yes or yes or no? Battle of Panipat, why held in Panipat? If Marathas,
if Mughals would have fought Maratha in right in in Deccan region, right? What happened to Aurangzeb? You all know. They could not tackle that guerrilla tactics. But in open war, in open battle, they had a dominant position. तो क्या है geographical fact? पानीपत, where is that location of Panipat? It is in flat rolling plain in Haryana. Yes or no? तो एक क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया? Highlight or what are the geographical factors, or discuss how geographical factors have contributed to development of ancient India. This was the question asked in 2023. और ये मैंने जब GS-1 पढ़ाया 2022 का बात है ना अमितांशु, तो आई डेल्ट विद दिस और मैंने बताया कि कैसे इंटीग्रेशन करके आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सब क्वेश्चन का कोई भी रेडीमेड आंसर नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग है, यू हैव द कंट्रोल ओवर द सब्जेक्ट, राइट, यू वुड बी एबल टू क्या, यू वुड बी एबल टू प्रोड्यूस एन आंसर, ठीक है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्या होगा, यू वुड बी इन ए फिक्स पोजीशन, जो पता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा उसका आंसर किया, और जो थोड़ा डायनेमिक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, वहां फंस गए। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर डायनेमिक इन यूपीएससी, राइट, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। दिमाग का घोड़ा दौड़ाना है, जितना दौड़ा सकते हैं, पढ़ना कम सोचना ज्यादा, ठीक है, पढ़ना कम सोचना ज्यादा, ठीक है। अभी बोले सर क्या बात बोले आज से तो बस सोचना ही सोचना है, हाँ? पढ़ूंगा तो मैं ऐसे भी बहुत कम पढ़ता हूं, है ना, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। पढ़ना है लेकिन दिमाग लगा, ठीक है। हम क्यों पढ़ रहे हैं, why we are studying this topic, why we are studying this aspect of the topic, is it important, is it relevant, is it going to make any difference in my preparation? Ask this question to yourself, you will get the answer, आपको समझ में आए, ठीक है। क्योंकि आप देखते हो ना कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, एंड यू सी द राइट, यू सी द मार्केट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई मीन द टाइप ऑफ कोर्सेज दे लॉन्च ना, क्रैश कोर्स, ये कोर्स, वो कोर्स, क्या क्या नहीं आता है, अब भागते रहते हैं हम लोग, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, ठीक है कि नहीं? क्यों क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वी हैव नॉट डन आवर जॉब in a proper way, we have not developed our foundation, we are just flying, we are trying to build a house in mid air, है ना, क्या होगा, टिकेगा ही नहीं ना। तो आपको हम लोग यहाँ पे फाउंडेशन पे पहले फोकस करेंगे, we start from zero level, right, trying to develop that, that solid foundation. Once that foundation is done, it is laid down, you'll have right, you'll have a stable structure, you'll have a stable preparation, you'll all be right, you'll always be in control. As a civil servant, what is your what is your job, what is your main job, क्या main job है आपका? Once you get selected, your main job is to solve problem of people, right, such problems which you cannot anticipate, huh? The problem which came all of sudden and you have to provide a solution. बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि रट्टा मार के क्वेश्चन आंसर याद करके हम यूपीएससी नहीं निकाल सकते, ठीक है। कुछ एरियाज में चलेगा, बिकॉज सम टॉपिक, some areas are conventional in nature, you have a tendency of repetition of those questions na, you can memorize just to save time, chalega, but for majority of the question you have to apply your mind, you have to produce those answers then and there only, ठीक है, and that is only possible when you have already practiced those things, right, when you have already when you have already activated your your thought process, and you know where I have to travel ना, horizontal, vertical ना, up down, north south, east west, किधर जाना है, ठीक है, you know, to think in which direction, you have to go for systematic thinking or you have to go for random thinking, ठीक है। तो सिचुएशन डिमांड करेगा और उसी के हिसाब से आपका थॉट प्रोसेस रैंडम हो सकता है और इट कैन बी सिस्टमेटिक, यस। तो these are the things we have to keep in mind when we take up those topics, will ensure that we have proper integration
we'll try to understand the undercurrents, right? The undercurrents among those topics within a paper and the undercurrent which you have between the papers, right? GS पेपर 1, 2, 3, जैसे अभी हमारा GS पेपर 1 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? And GS paper 1, why GS paper 1? Because GS paper 1 is the most difficult paper to prepare, right? और मेरा मानना है कि जिंदगी में सबसे डिफिकल्ट काम सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो अच्छे से गुजारना है ना, नहीं? ओ, आप उसमें बिलीव करते हैं? मैं पहले ही सो के आराम करूंगा, बुढ़ापा में तकलीफ उठाऊं, ऐसा है क्या? नहीं, तकलीफ उठा नहीं पाएंगे हम, ठीक है? तो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद द टफेस्ट पेपर, राइट? द मोस्ट वॉल्यूमिनस paper. The syllabus of the paper is so extensive, right? Sometime unending. There are topics which are open ended, है ना? खत्म ही नहीं होता. So it's better to deal with the hard thing first, right? Second objective is starting with GS paper 1 will give you a higher sense of accomplishment, a higher level of achievement, right? A higher level of satisfaction. Why? Because you are studying core subjects here. What are the core subjects? History, geography. These subjects have their relevance. I would say they have a high stake holding where in both mains and PT examination. So that gives you a high level of satisfaction. ये भी एक रीजन है. बहुत सोच समझ के जीएस पेपर 1 स्टार्ट कर, इसलिए नहीं कि राजीव सर ज्योग्राफी पढ़ाता है तो उसको स्टार्ट करने से शायद ज्यादा लोग आएगा, ज्यादा लोग सुनेगा, ऐसा नहीं, ठीक है ना? इसके पीछे प्लानिंग है और हम दोनों का ही प्लान, ठीक है, राइट? तो ये आज का दिन ऐसा है कि बहुत ऑस्पिशियस है, लेकिन बहुत क्या बोले, इमोशनल ऑस्पिशियस तो है ही, साथ साथ बहुत टायरिंग भी है, क्योंकि सुबह से लाइट नहीं है एंड आई एम प्रोफ्यूजली परस्पायरिंग. तो बैक टू बैक शायद हो जाएगा. तो कोशिश करते रहूंगा कि थोड़ा हाइड्रेट करके रखूँ अपने आप को ना. ऐसे भी ये समय में प्रॉब्लम होता है, आप लोग को भी ध्यान रखना है, ठीक है? बारिश का समय है, लेकिन डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा अभी ही होता है ना. तो दिस इज योर आई मीन रीजन व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद जीएस पेपर 1. नाउ यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है? बहुत सारा उसका पीछे रीजन है. 2 रीजन मैंने प्रोमिनेंट रीजन आपके साथ शेयर किया, ठीक है? क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं. लेट अस कम टू दिस पार्ट, सपोर्टिव इकोसिस्टम क्या क्या है. जैसे मैंने बताया, इस पे तो मैंने आपको बोल दिया, इस पे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है. आई विल गो डायरेक्टली टू पार्ट 3, ठीक है? तो क्या करें हम लोग, आप बताइए कौन सा टॉपिक ले? You want to suggest any topic, or you want me to demonstrate with the topic which I have already decided? Already decided, है ना? क्योंकि सर हम लोग बोलेगा तो आप तो कर नहीं पाए ना. आप जो पढ़ के आए वही पढ़ा दो, क्योंकि हम लोग बोलने से तो फंस जाएगा. ऐसा नहीं है दोस्त ना. आप पूछिए, कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना, मैं कोई गूगल तो नहीं हूँ ना. बट स्टिल आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं कर दूंगा. कुछ टॉपिक अगर है तो बताइए. मॉनसून है भैया, मॉनसून. मॉनसून से इतना प्यार क्यों है आपको? मॉनसून आने वाला है, आ गया तो मॉनसून. मॉनसून आया है कि आने वाला है? हाँ, आ गया है. कहाँ, आपका घर तक पहुंचा है? पहुंचा है. मेरा घर तक तो नहीं पहुंचा है, ठीक है? वी आर स्टिल वेटिंग ना. अरे आपको तो मालूम हो ना कि मॉनसून का इंडिया में आने का मतलब नहीं हुआ कि मॉनसून, राइट? मॉनसून हैज अराइव्ड एवरीवेयर इन द कंट्री, राइट? पीपल देयर इन नॉर्थ इंडिया, दे आर स्टिल वेटिंग ना. by almost 10th of July, this monsoonal wind would be able to cover all part of the country, right? एक बार में नहीं होता. अरे मॉनसून तो मालूम है ना, 1 जून को आता है. दैट स्ट्राइक्स द साउदर्न, राइट, साउदर्न कोस्ट, दैट स्ट्राइक द केरला कोस्ट, है ना? एंड देन प्रोग्रेसिवली इट कवर्स, right, covers different part of the country at different point of time. We call it as advance of monsoon ना. चलिए मॉनसून ही बोल दिया, अच्छी बात है. मॉनसून का ही बात कर लेते हैं फटाफट. इसे ऐसा मत समझना कि मैं मॉनसून पढ़ा रहा हूँ, बस इसमें बताना है कि मॉनसून है ना. तो मॉनसून में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? एंड देन बेस्ड ऑन दैट विल हैव सम मेंस ओरिएंटेड एंड पीटी ओरिएंटेड क्वेश्चन. उसका
क्वेश्चन में है कोई मेंस और एप्टीट्यूड और ऐप में डाले ओके सो मॉनसून ठीक है मतलब वी आर स्टडिंग क्या वी आर स्टडिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया तो वी हैव मॉनसूनल क्लाइमेट राइट ना मॉनसूनल क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट क्या क्या मतलब मॉनसूनल क्लाइमेट का हम मॉनसून किसको कहते हैं यू नो द टर्म मॉनसून हैज बीन derived फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड मौसिम yes and that mausim the word monsoon and mausim means what it simply means seasonal change in the direction of wind movement right seasonal change in the direction of wind movement is called as monsoon उसी को हम बोलते हैं monsoon right okay so this monsoon climate, or I would say this monsoonal climate, is found in many parts, right? I would say in many parts of Asia, especially in the southern Asia, right? Entire India, Pakistan, na, you have Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, ठीक है? These all countries, Bangladesh, ये सारा country में है. Some part of China also, right? Some part of China also. And when you go to the eastern coast of China, you will find again temperate monsoonal climate. So monsoon climate or climate, right? When we talk about India, right? India climate, or when we deal with climate of India, we are talking about Indian monsoon. Are you getting my point? You are talking about Indian monsoon. But when you, right, when you refer to the term called monsoon, right, then it goes beyond India. That it goes beyond South Asia, and it covers some part of, especially the eastern part of China, where we have temperate monsoonal climate. Temperate, right? Temperate monsoonal climate, not strict, I mean not in a strict sense of monsoon, because our monsoon are right, I mean the climatic condition which we have in our country, the monsoonal phenomena that takes place in our country is quite different from the monsoonal phenomena which we have in the eastern coast of China, right? That is more like land and sea bridges. But Indian monsoon is not like land and sea bridges. There are a variety of factors which operate together, and that gives rise to this specific, this special type of climate, that is your monsoonal climate. ठीक है? अब बहुत सारा हम लोग, इतना तो टाइम नहीं है, बस मैं एक छोटा सा बात बताऊंगा, है ना? इसको देखना है. This is your equator, right? Here is your tropic of Cancer. बहुत सारा चीज है, हालांकि देखो मतलब don't blame me for this, because this is just a demonstration, not at all covering the topic, okay? Just trying to demonstrate the approach, right? The approach we are going to follow for covering those topics, right? Here is India. Fine. There is one zone you must have studied, you must have heard. We call it as, क्या बोलते हैं? We call it as ITCZ. क्या बोलते हैं? ITCZ. And this is your tropic of Capricorn, right? Okay. हालांकि इतना बात आप बुरा मत मानना, इसमें बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, इसलिए आप ही बोला ये तो हमको पढ़ाया नहीं, क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? हम लोग क्या बुद्धू है क्या? जो भी, मतलब ये बस एक डेमोन्स्ट्रेशन है. तो you already know about the, you must have heard about the pressure belt wind system, ना? तो you have subtropical high pressure belt here, 30 to 35 degree north, 30 to 35 degree south, okay? And the primary wind which blows between what? Subtropical high pressure belt in northern and southern hemisphere up to ITCZ, क्या बोलते हैं उसको? This is your northeast trade wind, this is your southeast trade wind, ठीक है ना? अब होता क्या मानसून के टाइम पे? मानसून के टाइम पे मतलब बिफोर द अराइवल ऑफ मानसून व्हाट हैपेंस? देयर आर वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. You have role of jet stream, you have role of Tibetan highland, yes,
you have role of Maskarni High, you have role of intense hitting of the western part of India, right, where you have intense low pressure condition formed. Yes or no? Lot of factors, right? So I'm not going into that detail. I'm just showing you how it happens. Now, because of this peculiar location of India and the Indian Ocean, you know that Indian Ocean is a partially enclosed ocean, right? It is not an open ocean. It is surrounded by land area from three sides. Okay, open only toward the south. That means towards Antarctica. Yes or no? Okay. So what happens during May month, right? During May month, the Indian land mass starts hitting, right? I said the Indian land mass starts getting heated up. It starts getting heated very intensely because of intense heating by solar insolation, right? This is your time when you have apparent movement of sun northward, right? When you have the vertical ray of sun inclined in the northern hemisphere, right? And that is the reason why you have intense hitting of the Indian land mass. Now land mass is being heated up very quickly, and you know this, right? You know the difference between, right? You know the difference between heating and cooling of land and water. Land surface heats up very quickly and cools down very quickly, whereas the water surface takes time to heat up and cool down. ये तो पता होना difference of specific heat. Don't worry, we'll talk about all those things later on. मैं बस ये बता रहा हूँ होता क्या है. लैंड मास तो पूरा हीट हो रहा है, अगल बगल में जो वाटर बॉडी है, that water body is not able to absorb that extra heat from the land area. Why? Because the water body is already warm. Indian Ocean is an enclosed ocean, right? Surrounded by land area from three sides. There is no intermixing of water. Ultimately, the water is already warm. If a water is already warm, obviously it will have lesser absorbing capacity. And that leads to consistent rise of temperature over the land area, right? So much so that this ITCZ, which normally remains close to equator, right? Normally remains close to equator, to the north of equator, when the vertical ray of sun is falling on equator. But in the May month, what happens? This ITCZ progressively starts shifting northward. And by the end of May month, you'll find this ITCZ coming here. Okay? ITCZ shifts northward. याद रखना है कि ITCZ is a boundary between northeast and southeast trade wind. These two trade winds, they cannot cross ITCZ. ITCZ is just like a boundary, right? It is the zone of doldrum. हम लोग आगे बात करेंगे आई ऑफ साइक्लोन ना, सारा कुछ बात करेंगे. रिवर्सल ऑफ प्रेशर इन द आई, ऑल दोस थिंग्स लेटर ऑन. तो कहने का मतलब यह है कि ये तो ITCZ का मूवमेंट हो गया. Now when the ITCZ has moved northward, when the boundary itself has shifted northward, what happens? The southeast trade wind, they cross equator because they are attracted towards the ITCZ. Their ultimate destination is reaching up to ITCZ, and they start what? They start moving toward the ITCZ. As they cross the equator, क्या होगा? As they cross the equator, Coriolis force, right? Any free moving object in northern hemisphere would be deflected to its right. So southeast trade wind after crossing equator, they are deflected rightward and they became southwest. क्या बन जाते हैं? Southwest. These are your southwest monsoonal wind which strike the southernmost point of India first of all, right? And we say that monsoon has arrived in India, right? कब होता है normal date? You all know 1st June. अरे yes or no? इस बार 3 दिन पहले आ गया, ठीक है? तो 1st June, this is your normal date of arrival of southwest monsoonal wind, and after hitting the southernmost point of India, because the land is having a tapering shape, tapering है, taper करता है land ना, a triangular shape. तो क्या करते हैं? हवा को दो भागों में बांट देते हैं, right? The land is projecting toward the sea. So when the southwest monsoonal winds are hitting the southern point of India, they are getting bifurcated. Okay, and they develop into what? They develop into two branches. This branch is called Bay of Bengal branch. This branch is called Arabian Sea branch. ठीक है? और धीरे धीरे progressively the wind reaches to the northern plains. ठीक है? Is this point clear? So this is how the monsoonal phenomena takes place. अब क्या हुआ? From June to September, right? I mean, you have from June, right? June, July, August, September, almost for 4 months, right? You have southwest monsoonal winds blowing over India. Yes. And after September, what will happen? You all know about the apparent movement of sun. Yes.
From September, what will happen? There will be southward movement of sun. When you have apparent movement of sun southward, what will happen? अरे क्या होगा तब? बारिश भी खूब हो गया है, अच्छा खासा, राइट? बारिश भी ठीक ठाक हो गया है, और उसका वजह से क्या हुआ? लैंड सरफेस हैज बिकम cooler. Yes, and ITCZ will never remain there wherever we have low temperature condition. It prefers, it loves to remain in those zones where you have high contrast of temperature between land and water. तो क्या करते हैं? ITCZ starts hovering, shaking, and slowly, gradually, it starts shifting southward. धीरे 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 this ITCZ will start shifting southward. When it starts, धीरे धीरे होता है, जैसे ग्रेजुअली एडवांस होता है उसी तरह से ग्रेजुअली शिफ्ट होता है, ठीक है? एंड व्हेन इट हैपेंस, व्हाट हैपेंस? अल्टीमेटली द साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड वुड बी रिप्लेस्ड बाय नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, द परमानेंट विंड. यस, एंड वी कॉल इट एज व्हाट? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बोलते हैं ना. यस और नो? दिस इज योर, आई मीन नट सेल, आप ब्रीफली आप बोल सकते हैं ये मॉनसून है, ठीक है? क्लियर? अब ये तो हमने मॉनसून पढ़ लिया. अब मॉनसून का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट? व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, राइट, हाउ द मॉनसूनल विंड बिहेव, you know that that the monsoonal land or monsoonal climate is characterized by what? It is characterized by distinct dry and wet period, right? You have alternate wet and dry condition. Okay, alternate wet and dry condition. You all know that in our country 80% of the average annual rainfall is received only during these 4 months. ठीक है? 4 महीना में लगभग हम, अगर मान लो हम लोग को 1000 बिलियन क्यूबिक मीटर अगर पानी मिल रहा है एक साल में, ठीक है, अगर रेन मिल रहा है एक साल में, तो उस 1000 बिलियन क्यूबिक मीटर का 800 बिलियन क्यूबिक मीटर का पानी हमको कब मिल रहा है? ड्यूरिंग दिस 4 मंथ्स. रेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज रिलेटिवली ड्राई. बात समझ में आ रहा है? रिलेटिवली ड्राई तो कैसा हो गया? कैसा क्लाइमेट है? डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई कंडीशन, राइट? alternate wet and dry condition. Okay, 4-month wet, rest part of the year dry. Yes or no? ठीक है? Not only that, my friend, even during monsoon we do not have uniform distribution of rainfall. We do not have uniform distribution of rainfall. Even during monsoon, you'll find there are areas, there are regions where we have no drop, not a single drop of monsoonal rain. You must have heard about Ladakh. You must be knowing Lahaul and Spiti district. Yes, these areas, you must be knowing the western part of Rajasthan to the west of Jaisalmer. ठीक है ना? These all regions are what? They do not receive any amount of rainfall. So there is unequal distribution of rainfall throughout the, जो बारिश हो रहा है उसमें भी बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. And that rain and its distribution is mainly controlled by what? It is mainly controlled by distribution of physical features. Yes or no? The dominant type of rainfall which we have in our country is orographic rainfall. Why we have the rainiest place in Ceylon Plateau? Why? Just because of the physiography, right? Why we have northeastern region receiving heaviest of the rainfall? Physiography. Yes, बात समझ में आ रहा है? Physiography plays a very important role in the distribution of rainfall. If you move from south to North India, you will find the amount of rainfall decreasing as you move toward the north. Why? Because the carrying capacity of moisture is decreasing. अरे wind has less moisture, है ना? जब तक वो इंटीरियर में पहुंचते हैं, नॉर्दर्न इंडिया पहुंचते हैं, मॉइस्चर ही बहुत कम है. They are having little moisture, so there would be the frequency or the intensity of condensation would be very less. Cloud formation less, ultimately. ठीक है? तो इस वजह से हम लोग ये सारा ट्रेंड देखते हैं. आप बारिश को देखेंगे, if you start from eastern coast, move toward the interior part, you'll find rainfall decreasing. You start from the western coast, move toward the interior, rainfall decreasing. Start from south to north, rainfall decreasing. Yes or no? ठीक है? ये सारा basic characteristics है. Not only that, my friend, monsoon is also characterized by क्या? By breaks, burst. ब्रेक समझते हैं ना? 5-6 दिन लगातार बारिश हो रहा है, and then you have break for 5-7 days.
dry condition, hot condition. Yes, this is a right. This is a season. This is your monsoon season when you have high level of humidity, है ना? Temperature high and the moisture. That means the amount of water vapor in the air is very high, and that is suitable for what? Tell me. That is suitable for germination. That is suitable for photosynthesis and reproduction. Yes, and that is the reason why. That is the reason why the right the monsoon, or I would say the monsoonal rain, is is capable of supporting. It is capable of supporting the largest the largest ecosystem. The ecosystem which support almost 50% of world's population. Right? Why? Because all economic activity. Yes or no? You talk about agriculture, right? You talk about paddy plantation. सबको वेट करते हैं ना. We know कि मानसून आएगा, उससे पहले खेत जोत के तैयार करके रखते हैं. ठीक है. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी kicks off after the monsoonal rain. ठीक है. So that is crucial for the economy. That is crucial for food security. That is crucial for nutritional security. है ना? And that is the reason why from being an importer of food grain in in 1950s and 60s after independence, because we were left with nothing when the Britishers left us. हम लोग तो बर्बाद थे ना. We had nothing. ठीक है. और उसके बाद भी जो हमने अचीव किया, it is still monumental. These are I mean, you talk about educational institution, you talk about dams, you talk about जो भी नेहरू जी ने किया. ठीक है. And that too when you have no resources. ना, रिसोर्स नहीं है अभी तो इंडिया, राइट, हमारा बम्पर फॉरेक्स है, फॉरेक्स रिजर्व है. ठीक है ना? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम लोग. ठीक है. तो फ्रॉम बीइंग an importer of food grain in 50s and 60s, now India through technological innovations, right, है ना, through lot of I would say path breaking changes in agriculture, we have become the exporter of food grains. We have become the exporter of क्या, agricultural items in the world. हाँ या ना? किसका देन है? किसके वजह से? मॉनसून. बारिश नहीं होगा, चले जाएगी. You must have heard about dryland agriculture. Yes or no? Almost 2/3 part of India is having what? Is having dry zone. 2/3. Yes, they are they are rain-fed region of India. They depend upon the rain. They do not have developed irrigational infrastructure. पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये सब का बात छोड़ दो, आंध्रा, कोस्टल आंध्रा का बात छोड़ दो, you will find no developed infrastructure. ना, तो they have to depend on what? Rain. Monsoon is so crucial. ना, मतलब ये मैं एक एंगल आपको बता रहा हूँ. इसी एंगल पे यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा. ठीक है. तो अब देखिए हम लोग मॉनसून पढ़ रहे हैं और उसी के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं. ठीक है. देखिए हम लोग लिख पाते कि नहीं लिख पाते. ठीक है. पहला मेंस का दे. शेयर क्या हो? You can open your app also if you want to see on the app. अगर मेरा handwriting पसंद नहीं है तो ना. तो मैंने मॉनसून का ही डेमोन्स्ट्रेशन देना था ना. ऐसा मत सोचिए कि अमितांशु सर ने अभी बोला और मैंने नहीं, इसी का डेमोन्स्ट्रेशन प्लान तो यही था. ठीक है. इसलिए उन्होंने प्लान के हिसाब से ही बोला. ठीक है. क्योंकि आप लोगों ने तो करेज ही नहीं दिखाया ना. आप कुछ टॉपिक बोलते तो देखा जाता है ना, फिर मेरा भी टेस्ट हो जाता. चलिए.
तांसु वो एमसीक्यू निकालिए ना. एक क्वेश्चन लिख ना. हम्म. अभी आप लोग जो एमसीक्यूज है ना, तो आप लोग सभी ऐप में देखिए. इनका सर का कहना है कि आप लोग सब लोग ऐप में देखिए सो दैट यू बिकम फेमिलियर विद द ऐप ना. एक बार चला के देखिए. एंड देन I'll write one question here out of these two questions. I'll put one question here क्योंकि मुझे बोर्ड में लिख के ही तसल्ली मिलता है. ठीक है, मतलब मेरा जब तक पेन और पेपर नहीं इस्तेमाल करे तो सॉफ्ट कॉपी में मुझे मजा नहीं आता है ना. तो आप एक बार देखो वहाँ पे क्वेश्चन, और that will make you familiar with the app also. और बाद में भी हम लोग ये टेस्ट चलता रहेगा तो यू शुड नो इट हाउ टू हैंडल, हाउ टू ऑपरेट. कोई एक क्वेश्चन नहीं, पहला वाला क्या था? ये लिख देते हैं.
ऑनलाइन पे भी आप लोग पोल कर सकते हो, मतलब यू कैन आंसर इफ यू वांट ना। तो अब देख लेते हैं फटाफट 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन फर्स्ट फोकस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, मेंस मेंस के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। What characteristics can be assigned to the monsoonal climate that succeeds in feeding more than 50% of the world population residing in monsoon Asia? ठीक है, right? So what is the demand of the question? First of all, try to understand the demand, right? What has been asked here? देखो थोड़ा लैंग्वेज को ऑर्नामेंटल बना दिया गया, लेकिन डिमांड बहुत स्पेसिफिक है ना। What is the demand of the question? The demand of the question is to focus on the characteristics of the monsoon, right? Characteristics of the monsoon. Those specific characteristics are those specific characteristics are able to, or those characteristics help monsoon to what, to support, yes or no, to support the livelihood of people, yes or no, to support almost 50% of world population living in, like living in monsoon Asia. That is what has been asked. आपको दूसरे चीज पे फोकस नहीं करना, ठीक है। You just have to talk about the characteristics, and then a part of your, that means a paragraph can be devoted to the economic and social aspect which is related to monsoon. How, right, how the cultural ethos, right, how the cultural ethos depend upon the monsoonal, right, the monsoonal rainfall, the monsoonal, right, the monsoonal climate, yes or no. And this question was again, I mean, this question was asked in 2017, and again one question was asked in 2023, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? मॉनसून, इंडियन मॉनसून इन, राइट, इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ बिहार इज कॉल्ड एज पुरवैया ना। ये क्वेश्चन आया हुआ, हालांकि ये आप लोग आंसर करना मुश्किल होगा, हम लोग तो बचपन से सुनते आते हैं, है ना, पछिया चल रहा, पुरवैया चल रहा। पुरवैया मतलब ईस्टर्न विंड्स ना, पछिया मतलब वेस्टर्न विंड्स, ठीक है। तो जो वेस्टर्न विंड्स चलते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भाई बचा के रखना है ना। पछिया चलता है तो बचा के रखना, क्या, पुराना दर्द को वापस ले आता। अगर मान लो आपका कभी पैर टूटा है, कोई घाव है ना, कभी कुछ शरीर में हुआ है, तो उस समय, बिकॉज दीज आर कोल्ड एंड चिलिंग विंड्स, राइट, और वो आपका घाव को फिर से हरा भरा कर देता है ना। तो ये हम लोग बचपन से सुनते हैं, तो हम लोग तो आंसर कर लेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चले पुरवैया है क्या, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यूपीएससी ऐसा खेल करते रहते हैं। तो यहाँ पे सवाल बिल्कुल क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी मैंने बोला, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? डिस्टिंक्ट ड्राई एंड वेट कंडीशन, क्या कैरेक्टरिस्टिक? डिक्रीजिंग रेनफॉल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? अरे यही है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। डिक्रीजिंग रेनफॉल फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट टू द इंटीरियर पार्ट, राइट। डिक्रीजिंग रेनफॉल फ्रॉम, राइट, फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट टू द इंटीरियर पार्ट। Rainfall, right, rainfall is unevenly distributed, right. Even during monsoon, you must be knowing, you must have heard that some areas reel under flood condition, and other regions, other states of India are reeling under what? They are suffering from drought, yes, है ना। अरे yes or no, ये characteristics आपको सारा बताना है, and then one paragraph can be devoted how it supports, how it activates economic activity, right. The agriculture, mainly the agricultural activity, right. How crucial that agriculture activity is to sustain and support, right, support industries. There are many industries which are dependent on agriculture product. You talk about food processing, yes, अरे yes or no, आप पूरा इकोनॉमी के बारे में आप एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दे सकते हो, जस्ट वन पैराग्राफ, राइट। बट मेनली द, राइट, द फोकस ऑफ द आंसर वुड रिमेन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। मॉनसून का क्या क्या कैरेक्टर? ब्रेक होता है, बर्स्ट होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। यस और नो। दो ब्रांचेस हैं, दो ब्रांचेस का भी सब ब्रांचेस है, राइट। Arabian Sea branch has 3 sub branches, right? Western Ghat branch, yes or no? Then you have, right, then you have Central India branch, you have Kathiawad branch, ठीक है। उसी तरह से हमारा बे ऑफ बंगाल है, उसका 3 ब्रांच है, क्या? अरुणाचल ब्रांच, मेघालय ब्रांच, महानदी डेल्टा ब्रांच, ठीक है। तो आप उस पर फोकस कर सकते हो, ठीक है। You can talk about the, right, the type of rainfall. The monsoonal rainfall is mainly orographic, अरे mainly orographic. The pattern of distribution of rainfall is guided by
what is guided by the physiographic setting of the country. ठीक है, you see Aravallis, you see Satpura, you see, right, you see Western Ghat, you see Shillong Plateau. These all are prominent orographic barrier, and they what? And they kya? They control the weather condition. They control the amount of moisture distributed in different parts of the country, right? ठीक है? You can talk about. I mean, इतना समय नहीं है. 250 वर्ड लिखना है आपको. 250 words carrying 15 marks, right? And you are having almost 11 minutes, ना, 11 to 12 minutes maximum to write 250 words. सिंपल है या नहीं है? जो अभी मैंने तो कुछ पढ़ाया नहीं आपको, खाली बस बताया कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना. ठीक है, क्लियर? अब यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 1, ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून डिक्रीजेस फ्रॉम साउदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया. राइट, रॉन्ग? राइट, रॉन्ग? राइट, ठीक है, करेक्ट. The amount of annual rainfall in northern plain of India decreases from east to west. East to west. Yes. अरे east to west decrease करता है ना? Like east to west क्या होगा? You start from Odisha, West Bengal and move towards क्या? हरियाणा, पंजाब. तो rainfall decrease होता है because the carrying capacity of moisture decreases. ठीक है? The moisture present in the air is less, है ना? तीनों ब्रांच मिलने के बाद भी इधर से 3 ब्रांच, उधर से फिर दोनों मिलते हैं कहां पे? मतलब they meet somewhere in the NCR region, right? And they further proceed towards the northwestern part of the country. ठीक है, तो yes, the second option is also, है ना? तो क्या आंसर होगा? What is that answer? हाँ? D. मुझे नहीं पता मैंने क्या पूछा, जो है यही है. मैं अब भूल गया हूं मैंने क्या पूछा, लेकिन आप ये बोल रहे हो. मेरा हिसाब तो ये है, सी. ओ, पहले एप्लीकेशन में आप डाल दिए सर. अच्छा, मेरा टाइम ज्यादा हो गया. अच्छा 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 अच्छा, चलेगा, ठीक है. तो यूपीएससी में सवाल जो था ये था, तो मैं टेस्ट करने के लिए उसको ना, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर दोनों याद कर लेते हैं तो उनको टेस्ट करने के लिए मैंने ये कर दिया. यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, डी इफ इट इज इनकरेक्ट ना. ठीक है, पर यूपीएससी में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इज और आर करेक्ट, तो उस केस में आंसर सी. ठीक है, अंडरस्टूड कि क्या हम लोग करने वाले. ठीक है, किसी भी टॉपिक को वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम both, right, you know, the from the requirement or from the you know, that angle which is right, which is required to follow for PT, right, PT preparation, for PT examination. और दोनों इंटरकनेक्टेड है. देखो ना, आपने अभी मॉनसून पढ़ा, तो कहीं तो वहां पे कोई फैक्ट वैक्ट का बात नहीं कर रहे थे हम लोग ना, हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट का बात किए, लेकिन अल्टीमेटली वही सारा कॉन्सेप्ट हमको एमसीक्यूज में काम आ रहा है और वो सॉल्व कर पा रहे हैं. यूपीएससी में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा. देयर वुड बी नो ऑनलाइन, आई मीन वन लाइनर आपको बहुत कम मिलेगा. ठीक है ना, बहुत लिमिटेड, एक दो मिल गया तो मिल गया. ठीक है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, राइट. इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर राइट, कॉन्सेप्ट्स आर well developed, if your concepts are within your control, if you are having a complete clarity, प्रॉब्लम नहीं, आराम से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, 70 to 80% यू कैन सॉल्व ना, बहुत आराम से. जो हम लोग रेस्ट करेंगे, जैसे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इंटीग्रेटेड मींस जीएस कोर्स, इन जनवरी मंथ वी हैव प्लान्ड ए क्रैश कोर्स. क्रैश कोर्स फॉर व्हाट? 2 महीने का क्रैश कोर्स ना, 2 months क्रैश कोर्स फोकसिंग ओनली ऑन द पीटी एग्जामिनेशन, ताकि जो बचा खचा कसर है, जो रैंडम फैक्ट्स है, उसको भी हम लोग, प्लान ये होता है. ठीक है, ये नहीं कि हमने करा दिया मॉड्यूल कोर्स, अब पता नहीं जाना कहाँ है. ठीक है, समझ में आया? तो मॉड्यूल कोर्स होगा और उसके बाद क्रैश कोर्स इसलिए होगा कि अब जो जिधर हमारा लूज एंड है, थोड़ा मोड़ा जो भी बच गया है,
जहां जहां से सबको पकड़ के लाके एक जगह, ठीक है, फाइनली उसको कवर करना, then you would be fully prepared ना. Clear? So with this I'll end my हाँ हाँ डाल दीजिए. अभी सब लोग फिर से ऑनलाइन देखिए. 2 more questions are there, you can see same topic. हाँ 2 मिनट. हाँ ठीक है. You have 2 minutes ना for both the question. 2 मिनट ले लीजिए, पहला दिन है. नीचे का ये टूट गया. हाँ कैसे टूट गया उसको तो वापस कर देते हैं. आज बैठे गिरते गिरते बच्चे. आज मैसेज डाल दीजिए उसको. प्रीलिम्स वाला बैच को भी ना, वो लोग यहीं पे ले रहा बोल रहा था, लोग पिक्चर दिखाई नहीं देते. बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा तो दिखा. छापे हुए सब. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी अभी नहीं. चलिए आपका तैयारी करिए. मेरा हो गया. अभी बाहर जा रहे हैं भाई. आपका तो टाइम लगेगा. क्यों 15 मिनट. स्ट्रेटजी ये सब काम मत कीजिए. स्ट्रेटजी ये सब मत काम कीजिए. ठीक ठाक तो पार्टिसिपेशन. हाँ Okay, so moving to the next question, 1 minute will be provided, right? 2 minute ka waiting time is too much. तो सुना आज सुनेगा. ऐसा क्या दे दिया. ऐसा क्या इसका. ठीक है ना. हमला कीजिए. देखिए ये लड़के टॉप पे है. जैसे कम थर्ड रो सेकंड रो करना पड़ेगा. किसी टॉप शॉट ग्रीन शॉट नीचे देखिए चश्मा लगा सर. ये मार के थर्ड रो फोर्थ रो मेरे को बहुत मच्छी लगे सर. बहुत ज़्यादा. आपको मुझे क्या नाम से बोल कितना बोलूँगा है. अगर मैं बस 5 बार भाग खत्म कर देंगे.
चला 5 मिनट का ब्रेक नहीं आवाज मच जाता आवाज मच जाता ऐसे पास मत होता आवाज अच्छा नीचे ला वही ना ओके सर इसमें इस क्वेश्चन में दिस इज द रिस्पॉन्स एंड दे आर द टॉपर ठीक है so Jimsi and Mitotai they are the सेकंड ये दो करेक्ट एक रॉन्ग जिम्सी का दो करेक्ट एक अनअटेम्प्टेड ठीक है तो congratulations you are the topper of the test अभी दो क्वेश्चन में आप दोनों क्वेश्चन सही हुआ है बाद बाकी ज्यादातर लोगों का एक क्वेश्चन सही है मितोताय सेकंड पोजीशन पे है और बोगो थर्ड पोजीशन मीनम भी सर सेम है मीनम भी फोर्थ फिफ्थ सबका सेम मार्टिना और जो खुशी है कोई खुशी है जो आपको दुख दे रहे हैं वो इनका नाम खुशी है हाँ ये सर okay we'll talk about the fourth one so much हेलो okay so again good morning everyone now I'll briefly take you through the last stage some administrative and technical details that I'll be sharing with you all right regarding the courses so the course name is Sunrise Batch and this Sunrise Batch contains 7 different batches correct this entire course contains 7 different batches there are 4 batches of GS papers GS-1 2 3 and 4 plus there are 2 crash courses within this package one for GS prelims and one for CSAT and one more thing we have included in it it is known as the prelims test series correct so 4 plus 2 6 6 plus 1 7 together we call this sunrise course together we call it the 7 different batches are here now we are starting with GS paper 1 and GS paper 1 is going on till 30th of September right पूरा जुलाई पूरा अगस्त पूरा सितंबर और मिड जून ये जो 10-12 दिन अभी बचे हैं so approximately it is around 3.5 months in this 3.5 months we have 85 classes lined up correct Sundays there will be no class and tentatively obviously I mean if I write 30th September here you should know that it is a land of it's Tani land is a land of press conferences it's a land of protest so plus minus 5 days it has to be understood here right it can be first week of October but not beyond that 5 days ka margin you have to keep okay now if you see that schedule carefully after GS paper 1 yeah during GS paper 1 GS paper 4 is starting okay GS4 is starting in August last week of August we are starting with GS paper 4 and GS paper 4 is known as ethics समझ गए बात एंड पूरा सितंबर आपका GS पेपर 4 चलेगा तो माय फ्रेंड GS1 भी क्लास होगा सितंबर में एंड GS4 भी क्लास होगा सितंबर में बात समझ में आ रहा है इफ यू ऑप्ट फॉर GS4 देन यू हैव टू कम फॉर 2 टाइम्स अ डे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझिए इस बात को if you see the calendar right page number 7
में जब आप कैलेंडर को देखेंगे, जो हम लोग के कोर्स का कैलेंडर है, उसमें जीएस पेपर 4 इज स्टार्टिंग इन अगस्त मंथ. सो 4 and 1 दोनों, 1 तो चलता रहेगा सितंबर तक, 4 भी पूरा सितंबर चलेगा. ठीक है. अब 4 का टाइमिंग क्या होगा? ऑब्वियसली आफ्टरनून और इवनिंग टाइम. वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे. आपको एक एग्जाम क्लास शुरू होने के 10 दिन पहले विल बी इन्फॉर्मिंग यू, but you have to come twice if you are taking admission in both the papers. This has to be understood at the first. Now GS1 and GS4 will be completed together. एक साथ GS1 और GS4 कंप्लीट होगा. मे बी GS1 थोड़ा पहले हो जाए GS4 से, राइट, अराउंड 1 वीक पहले हो जाए, बट मोर और लेस सेम टाइम पीरियड में 30 सितंबर के आसपास, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के आसपास this GS1 and GS4 both will be completed. Is it fine? Now then comes another major pillars which are GS2 and GS3, and as per the plan entire October till Christmas we'll try to be finishing it up by 25th December. यानी पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, right, 3 months are going to be GS2 in the morning, GS3 in the afternoon or in the evening. करेक्ट है? या तो GS2 इवनिंग में, ये समझ रहे बात, मतलब 2 क्लासेस अगेन, एक दिन में 2 क्लासेस अगेन आप आएंगे. तो 2 और 3 पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. 1 सिंपल सिंगल चलेगा जून, जुलाई, अगस्त. क्यों? क्योंकि इस बीच में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, जो 2 मेजर पिलर्स, विल बी ओवर इन जुलाई एंड अगस्त. समझ रहे हैं बात? सो दैट देयर इज नो एडिशनल बर्डन ऑफ सेकंड क्लास. और जीएस पेपर 1 में जब सोसाइटी शुरू होगा, सोसाइटी इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, करेक्ट. सोसाइटी इज समथिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड. सो वंस सोसाइटी स्टार्ट्स, then only ethics will be started, so that the workload can be managed effectively. Are you getting it? So till August, till the time GS4 starts, history and geography will take 2 months, and history and geography will be completed before GS paper 4 starts. Is it fine? The plan is clear. But you have to come for 2 times a day in September, October, November and December if you take 2 and 3. Done? Is this clear? Very good. Now tentatively by the Christmas or end of December we will be completing GS2 and 3. Go for a break or study. Obviously break में तो नहीं जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पर ठीक है. Then again from 15th January, now again plus minus 5 days is understood. Again from mid January to mid March there will be prelims crash courses in GS as well as in CSET. Again 2 classes a day. Fine. 2.5 hours morning में prelims, फिर 2.5 hours afternoon में CSET classes will go on till mid March. लगभग 20 मार्च तक ये क्लासेस चलेंगी. 40 क्लासेस आर देयर, 45 क्लासेस इन जीएस एंड 40 क्लासेस इन सीसेट. इज इट फाइन? और जनवरी के मंथ से, फ्रॉम जनवरी टिल यूपीएससी प्रीलिम्स इन मे, फ्रॉम जनवरी टू मे a comprehensive prelims test series will be there. This is our plan, this is our calendar, and this calendar has been shared well in advance with you all, right? You can all refer this calendar. Make sure you keep in mind the dates. Now if I come to the fee part, GS1 it has maximum number of classes and it is going to be held in around 85 classes, my friend. Now GS1 will be held in 85 classes. GS1 ka fee is 17,000 rupees. I mean it is known, it is clear. GS4 it is around 35 classes. It does not require a lot of in-depth because prelims mein it is not important, right? Only in mains it has a separate paper, so the fee is 13,000. GS2 and GS3 they have 60 classes, and in this 60 classes obviously we'll be looking into all the prelims related aspect of economy as well as polity. And this 60 classes, again there is 60 class of GS3, so this will be 15,000 and this is 15,000. Now if you add it up total, it comes down to 60,000, correct? Hoga? Now come to the prelims crash course. If you come to the crash course part, the GS prelims crash course, it costs around 15,000 rupees, and the CSAT for 40 classes it costs around 12,000 rupees. Fine. Then we have the prelims test series.
there will be a number of multiple tests, around 20 some tests will be there, 20 25 depending, minimum 20 will be there, but maximum I have not yet finalized the dates. I have to see the Sundays, how many Sundays are there between January to May. On all the Sundays or on every day, one day of the week, maybe on Monday or Sunday, there will be continuous tests starting from 15th January. So from 15th January till 15th May, right, every week there will be one test. Okay, so around 20-25 tests will be conducted between these 4-5 months, and the fee will be 3000 rupees. This fee will not increase, my friend. It's not that you have to take admission in all the courses now, correct? This fee will not increase no matter what. ये बढ़ेगा नहीं, ये घबराना नहीं है इसमें, होगा, ये आपको पहले बता दिया गया है, just you have been informed. If you add this up, 60,000 plus 27,000 plus 3,000, so 27 plus 3 is 30,000 and this is 60,000. 60 plus 30 is 90,000, correct? There is only one advantage if you take admission in this entire course together. If you take admission in this entire course together, you don't have to pay 90,000 rupees. In this case, you will be eligible for a 10% discount, means around 9,000 rupees. You don't have to pay, you can save it, and you have to pay only 81,000 if you take entire course at one go. Is it clear? Now, next question that will come in your mind is related to installment. There is no need to go for installment, my friend. Understand, इसमें installment का क्या जरूरी? This will only be applicable when you pay this amount एक बार में अगर आप पे करते हैं तभी, ठीक है? अब आप आते हैं दूसरा installment. तो installment is not required. GS-1 is starting from today, right? So you can pay only, you can take admission only in GS-1. Are you getting my point? No need to take admission in two papers. Let GS-4 start. अगस्त में शुरू होगा, आप तब एडमिशन ले लीजिए. समझ गए मेरी बात? जब 2 और 3 शुरू हो रहा है तब मान लीजिए आपको 3 में नहीं लेना हो एडमिशन, सपोज you are an economics graduate and you don't think that you will be requiring GS3, no need to take admission. Are you getting my point? So multiple courses are there, multiple entry points are there, multiple exit points are there. Only if you go for a entire package, the course fee is that much. No need to ask for installment. You can take individual admission in each paper. Is it fine? This is one thing. Secondly, all classes at SARVASYA by default are held in offline as well as online mode. समझ रहे हैं बात? कोई कोर्स में भी फ्यूचर में सिर्फ ऑनलाइन हो सकता है, बट कोई भी ऑफलाइन बैच सर्वस्या में कभी भी ऑफलाइन अगर है तो वो ऑनलाइन है ही है बाय डिफॉल्ट, राइट? नो नीड टू इवन आस्क. एंड इफ द बैचेस आर ऑनलाइन, ऑब्वियसली माय फ्रेंड, द क्लाउड इज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग ना, तो द रिकॉर्डेड लेक्चर्स विल ऑलवेज बी देयर. If you take admission offline, could not make it on time in the class because of some medical emergency, you can watch the class live. जैसे आप लोग अभी ज्वाइन किए, correct है? If you miss the classes because of some reasons, you can also watch the recordings later on. Now, how many times can you watch the recordings? Unlimited number of times. There is no stoppage. ठीक? कब तक देख सकते हैं? सवाल ये है ना. तो GS1 is starting today till 30th September. It is going to be completed. तो 30 सितंबर तक तो रिकॉर्डिंग है ही है. अब उसके बाद अक्टूबर में रिकॉर्डिंग रहेगा, नवंबर में रिकॉर्डिंग रहेगा, एंड टिल 31st दिसंबर रिकॉर्डिंग्स विल बी देयर. इज इट फाइन? 3 मंथ तो है ही है, साथ ही साथ till 31st December the recordings of GS classes including this workshop is also being recorded, right? It will be uploaded in automatically on the app. ठीक? This recordings will be there. अब आप सवाल आता है कितनी बार? बहुत बार देख सकते हैं, लेकिन you cannot log in into your app from 2 devices at one time. Immediately alert mobile number comes to us that this particular student has seen multiple account and multiple device logins, right? So all these features are there in general. So एक बार में आपको लॉग आउट करना पड़ेगा फोन से, अगर आपको लैपटॉप से देखना है तो, है ना? लैपटॉप से अगर आप देख रहे हैं, फोन से देखना है तो लैपटॉप में लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, करेक्ट? बट यू कैन वॉच इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल. रिकॉर्डिंग देखते समय देयर इज अ ऑप्शन ऑफ 2x, 1.5x, 1x तक आप जा सकते हैं आराम से. 2x के ऊपर तो बहुत अजीब सा सुनाई देगा, है ना? तो वो जरूरी नहीं है देखना, बट आई मीन देयर आर फीचर्स एंड ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल. ओके,
Now this is about the course fee, course structure, and this. Now come to the course structure of GS paper 1. How this 85 classes have been divided. Abhi you must have got 2 pages booklet with you. 2 पेज का booklet मिला होगा आपको. उसमें come to page number 3. There is a table of classes. नहीं, white color का होगा, white. There will be classes. Fine. Now, so geography, you must be seeing there are 22 classes plus उसके नीचे आप देखेंगे mapping geography is also there, right? Geography related to mapping, drainage, river, because they are not important in mains, but they are important in prelims stage. And as it is a foundation course, we are going to have an extensive, complete 30 classes for geography. Is it fine? Both mains and prelims. And you have seen how we will be understanding the topics in an integrated manner. Just that we have seen the example of monsoon, but similarly river system, drainage के बारे में पढ़ते समय there has to be a complete and elaborative use of maps that we are going to do. Now this 22 classes will be taken by Rajiv sir. He will be starting the classes from 20th, and once this part is over, some little bit mapping part will be done, and other small we can say other isolated topics of geography will be dealt once the main part of geomorphology, climatology, oceanology is completed. Is it fine? Now, then you can see a plan for history. History, my friend, understand, in mains examination, right? In mains examination, you have to study modern Indian history. Now, if I say modern Indian history, it means the history of India is starting from 1857 to 2025, correct? 1857 के बाद मोस्टली हम लोग इसको देखते हैं. 1857 से कुछ लोग 18th century से, मतलब approximately that depends upon different things. So we have to study about post independence history. If you put it 1947, then from 1947 to 2025 post independence history. Then you have to study about world history and little bit about art and culture of India. There is no mention of ancient history and medieval history in mains. समझ रहे हैं बात? मुगल्स के बारे में नहीं पढ़ना है, गुप्तास के बारे में नहीं पढ़ना है, मौर्यास के बारे में नहीं पढ़ना है मेंस में. But this batch is not only mains oriented. This batch is a foundation batch, correct? So there has to be a clear cut segregation. In PT or preliminary test, you have to study about ancient history as well as medieval history as well as modern Indian history. But you don't have to study world history in PT. But in mains you have to study, correct है? तो ये सारा चीज है जो हिस्ट्री में पढ़ना है. तो ये तो it will be completed, and you can see modern Indian history has 20 lectures, right? Now once Sanjay sir covers modern Indian history, he will be covering both PT and mains, correct? Because यहाँ पे भी पढ़ना है, PT में भी और mains में भी पढ़ना है. Done है? जब post independence history होगा तो only in mains, it is not required in prelims examination. World history is not there in prelims, but question आता है, कोई एक question आएगा world history में. तो एक ऐसा टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री जो बहुत गैम्बलिंग वाला है, गैम्बल खेलना पड़ेगा इसमें. बट उसके बाद भी we are giving 10 classes to world history in general, because if you are going to keep history as an optional, if you are going to keep political science and international relation as your optional, then these 10 classes will be extra important for you. Are you getting it? Although GS में है, but world history पढ़ना पड़ेगा. अगर आपका पॉल साइंस ऑप्शनल है या हिस्ट्री ऑप्शनल है तो वर्ल्ड हिस्ट्री अपने ऑप्शनल में पढ़ेंगे. तो here you have to study art and culture. What sir has done is art and culture and ancient and medieval history will be covered together. Suppose Indus Valley civilization or Harappan civilization is being studied, right? So no need to go through only the sites of Harappan Valley, or no need to go through only the timeline of Harappan Valley. You have to see the art related aspects, the culture related aspect in Harappan civilization, and related aspect, as well as the reasons and causes of decline of Harappan civilization and all, right? So these two and art and culture of ancient, art and culture of medieval history will be studied together, because art and culture modern Indian history में ज़्यादा कुछ खास है नहीं. समझ रहे हैं बात? So these three things together will be covered in 10 classes. So how many classes for history, my friend? 20 class
मतलब ये दोनों 20 क्लासेस में 20 + 10 30, 30 + 10 40 classes. Is it fine? So history goes for 40 class, and you can see majority portion out of 85 classes have been devoted to history and geography. These are the minimum number of classes, my friend, right? There are minimum number of classes. Okay, now bacha class kitna? 15. 15 classes are somewhat left. These 15 classes will go to the topic related to Indian society. So Indian society has around 13 classes, and some aspect of geography are there known as climate change. थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए 2 classes are there for climate change in general. Little small topics. We all have been making projects on climate change since we were in class 6th. Huh? Still the climate is changing, but we are unable to do much. So this is the rough plan. 30 plus 40 70, 70 plus 13 is 83, plus 2 85. Minimum classes that are going to be there is 85. Obviously maximum बहुत बढ़ने का भी chance है, so it will not cross 87 88. Is it fine? Below 90, between around 85 86 will be trying to have this particular classes. Okay, how many booklets will you be getting? Again, this is a good question. Printed booklets or PDF, दोनों चीजें आपको मिलेंगी. There will be total 10 booklets in GS-1. 10 booklets will be there. History का 3, ज्योग्राफी का 2-3, राइट, सोसाइटी का. अब ये नहीं कि सारा बुकलेट एक ही इतना ही मोटा मोटा मिलेगा, नहीं. Some booklets will be of 20-30 pages, right, depending upon its current update and the time of its availability. Now after this workshop session gets over, अभी जो 10 मिनट बाद आप जब नीचे जाएंगे, ensure that you collect booklet number 1 from the office, irrespective whether you have taken admission or not, because classes will start from 20th and you need those booklets. Now the question is, can you like attend few classes? देखने के लिए ऐसा आप देख सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या? Yes, you can do that. You can attend 5 classes without taking admission, right? Without taking enrollment, you can attend first 5 classes. Understand, those are not demo classes, means the classes will not be repeated. वहां से classes आगे ही चलता रहेगा. बस आप, you can take, जैसे सर बोले, you can take some time to decide whether you want to start this journey now or you want to wait. Okay, the calendar, the plan is clear. The tentative calendar is all that we have discussed with you. Comes to the faculty members. So GS paper 1 is tackled by Rajiv sir himself. After Rajiv sir, some part of Indian geography I will be taking it, as I take Indian geography in the prelims part. Then the senior most faculty Sanjay sir will be coming, who is teaching history since last 17 years. He was earlier associated with ROS IAS, which you all are aware that which met an unfortunate event in the Delhi floods 2 years ago, and sir is now associated with Vision IAS Delhi since last 7-8 years, right? So we have adjusted his time and he will be coming here after the geography part is over, around from next month. Once the geography gets over, so next month se Sanjay sir will be taking the history classes. Then again for society, and if some portions of mapping of geography I will be returning, and climate change will be taken by Ramneek Singh sir. Correct. So this is the plan of GS paper 1. Once GS4 starts, then we will have a short mini workshop session 2, right, according to the plan. No need to discuss it now. The calendar is with you and I just request all of you to plan it accordingly. Registration and admission, I have made it clear, very clear, for 5 classes starting from 20, right. 20 से count करते हुए 5 दिन आप ऐसे बैठिए, आइए, booklet ले लीजिए, classes को करके देखिए, then only you can take, then also you can take admissions. After that you have to like complete the admission formalities in general. You can take admission in one paper as per your wish. Only benefit of taking admission in this entire course is that we are offering a first time 10% off, that is 9,000 off. Is it fine? Now just I'll request sir for the last session of this day, open forum, where any kind of doubts if you have, you are free to ask. This will be all from my side.
So it's time you speak. Okay. कुछ सवाल, कुछ क्वेरी? क्लिप्स को तो अभी जाके कलेक्ट कर लो बोला था। सपोज हम 5 डेज के लिए कलेक्ट किए, उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि कंटिन्यू नहीं करेगा ना, तो बुकलेट को रिटर्न करना पड़ेगा। बुकलेट आपके पास ही रहेगा, मेरे पास रहेगा। नो नीड टू रिटर्न. ठीक है सर। The only commodity which multiplies after division is क्या है? ज्ञान, नॉलेज. हाँ, वापस नहीं करना. आप अपने पास रखेंगे, कम से कम जिंदगी भर उसको देखेंगे, सर्वस्या का याद आता रहेगा. मेरा मेरा काम हो गया है कि नहीं? मेरा इन्वेस्टमेंट है ये भाई. कोई सवाल? और आप लोग नहीं? अच्छा, आप लोग ये इंतजार में है कि सवाल तो पूछेंगे सर, रुक जाइए, क्लास शुरू होने दीजिए, ऐसा है? ठीक है. कुछ सवाल है आपका? यू माइक है, आप बहुत अच्छा लगेगा बोलने में. कुछ बोलना चाहते हैं आप? बोलिए. कोई नहीं बोलेगा खुशी, दुख दीजिए. बैठ के आराम से, आराम. सर सर अगर अभी अगर कोई प्री का ले रहा है सर, तो क्या उसको ये मेंस वाला ज्वाइन करना चाहिए क्या? देखो, it totally depends upon your I mean your availability, your convenience ना. Do you have that spare time है? अगर मुझे honestly पूछेंगे तो I would suggest कि go for the integrated course ना. अगर यूपीएससी के लिए सोच रहे हो तो मतलब if your target is APPSC, that's fine, you can continue with in that APPSC GS prelims batch. But if you are targeting UPSC, so it's better to start with even for APPSC we have that we have the same syllabus and you have to prepare the mains examination. I mean the main syllabus first before you take your PT examination. नहीं तो बहुत मुश्किल है. मतलब if you wait for PT result and then you will start preparing mains, तो the fate is already sealed. आपको पता है आपका नहीं होने वाला ना. किसी भी तरह से पहले तो करना पड़ेगा. तो और थोड़े ही समय में मतलब यू विल गेट टू नो दिस. धीरे धीरे मतलब यही कोशिश भी मेरा रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिसेप्शन अमॉन्ग यू अबाउट दिस कोर्स. आई विल फेज आउट दोस कोर्सेस ना. विल हैव ओनली वन कोर्स. ठीक है, पूरा साल डेडिकेटेड तरीके से, इधर उधर कुछ नहीं, है ना. नहीं तो मैंने पहले बोला कि पेशेंस लेवल होना चाहिए. 3 महीना भी अगर आप बैठ नहीं पा रहे हो तो फिर 1 साल कैसे बैठोगे, है ना. और ये भी तो ठीक नहीं है ना कि एक पेपर आपने कर लिया, दूसरा पेपर नहीं किया, ठीक है, आधा करके छोड़ दिया. तो इट शुड नॉट बी हाफ हार्टेड प्रिपरेशन. आप मान के चलो कि अगर करने जा रहे हैं तो मेरा आई हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 1 ईयर ना, एटलीस्ट 1 ईयर. एंड दैट 1 ईयर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू चेंज योर होल लाइफ. ठीक है. और करना क्या है यार, कोई हम लोग मार्स पे तो किसी का प्लान नहीं है ना जाने का. कोई मार्स पे तो नहीं जा रहा ना. ऐसा कौन सा काम करते हैं हम लोग जो पढ़ नहीं सकते, और पढ़ने के अलावा आपके पास कोई होप है भी नहीं. ठीक है. कोई बिलियनियर का घर का तो है नहीं, अगर आप लोग बिलियनियर का घर से आते हैं, करोड़पति ऑलरेडी है, तो कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पैसा होके भी कैसे खर्च करना वो भी मालूम होना चाहिए ना. ठीक है. तो इसके लिए मतलब the preparation itself will make you very disciplined na. You would be able to take decisions in your life even if you don't qualify civil services. Believe me, you will be an improved human being, right? A different human being, है ना. आपका अप्रोच बदल जाएगा, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, आप निगेटिविटी से दूर रहोगे. ठीक है. फालतू का रील देख देख के खुश नहीं होगे ना.
और कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेशन, अपना ही रील बना के खुद ही देख रहे 25 बार कोई देख नहीं रहा, सब्सक्राइबर ढूंढ रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दिया, खुश हो गए ना। तो इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनना ना, अपना बड़ाई खुद से करेंगे तो 2-4 दिन हो सकता है, नहीं चलेगा ज्यादा। लेट पीपल डिसाइड। ओके, सब कुछ फर्स्ट बुकलेट जो आप अभी ले रहे हो ना, उसमें ऑलरेडी आपको पीछे मिलेगा, है ना। सब प्लान्ड है, कुछ भी मतलब यू जस्ट नेम इट ना, सब प्लान्ड। कुछ कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन जैसे ये होगा 4-5 है आप यहाँ से। यस लीचा, come in. What about the answer question writing? Yes, we'll have the question answer writing session in the class itself. Uh, maybe maybe with a gap of 2-3 days ना। शुरू में हम लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि बाद में तो मेंस के टाइम पे तो फिर हमारा यही अप्रोच होगा, जब आप लोग मेंस देने लगोगे तो फिर डेडिकेटेड आंसर राइटिंग सेशन होगा। मतलब फिर हम लोग कोर्स नहीं करेंगे, बात समझ में आ रहा है, कोई रेगुलर कोर्स नहीं होगा, फिर आंसर राइटिंग बस। तो कोर्स भी चलाना है और साथ साथ में आंसर राइटिंग में थोड़ा लिखने का भी प्रैक्टिस रहना चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा ना। तो उसके लिए हम लोग एवरी थर्ड डे विल हैव वन क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस इन द क्लास, विल हैव 10-15 मिनट्स फॉर दैट। मेंस का बात कर रहा हूँ, पीटी का क्वेश्चन वीकली आपको मिलेगा, ठीक है ना। एवरी डे विल हैव 5 क्वेश्चन, तो ना, जी सर। तो 5 into 6 30 क्वेश्चंस। एट द एंड ऑफ द वीक यू विल हैव 30 क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स ना। और वो आराम से आप घर में प्रैक्टिस करो, ऐप में प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम लोग टेस्ट सीरीज जैसे बताया है, वो हमारा टेस्ट सीरीज होगा, हम लोग आपको OMR सीट पे प्रैक्टिस कराएंगे, वो भी शुरू होगा ना, वो भी साथ साथ में चलेगा, ठीक है। सर आंसर राइटिंग फॉर ऑनलाइन आप वो कर सकते हो, यू कैन स्कैन योर कॉपी, आई मीन स्कैन योर आंसर ना। हाँ, अच्छा, एनी नबम सर, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर ऑनलाइन बैच। वही मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना आंसर लिख के स्कैन करके भेज सकते हो, एंड देन विल गिव आवर फीडबैक। मुमतम सर, विल देयर बी एनी क्लास फॉर ऑप्शनल? यस, वेरी सून, वेरी सून, टेंटेटिवली इन September month. Arunachal related syllabus will be addressed. Yes, ऑटोमेटिकली वो GS-1 में तो उसका है ही, जो जो अमेंडमेंट हुआ है वो रहेगा। और बाद बाकी हमारा डेडिकेटेड जो 10 क्लासेस हमारा हमने 12 क्लासेस ना, देयर वर 12 क्लासेस दैट वाज हेल्ड फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड अरुणाचल पार्ट। तो वो पूरा यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और ऐप पे भी है, तो आप उसको हमेशा एक्सेस कर सकते हो, एंड दैट विल रिमेन रेलेवेंट फॉर कमिंग, आई मीन एटलीस्ट 2-3 इयर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा अपडेटेड है। और बहुत लेंथ एंड ब्रेथ उसका देखेंगे तो विल फाइंड दैट ना। बस आप लोग का कुछ नहीं है ना, क्वेश्चन आपका है? So the question would be, for somebody who has not done this next level institution from if you could mentorship development. See, we have some limited subject na, we provide I mean we provide or offer some limited subjects only, I mean not all the subjects. I don't know which subject you are talking about, तो आपका कौन सा सब्जेक्ट का चॉइस है, जैसे कुछ आइडिया? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए तो साक्षात मैं ही हूँ, है ना और तो और ज्योग्राफी, और उसके अलावा जैसे पबैड है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, देन यू हैव हिस्ट्री ऑप्शनल ना। एंथ्रो के लिए भी ट्राई करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वी हैव। ये तो ऑप्शनल, मतलब दीज आर द ऑप्शनल वी ऑफर ना।
इसके अलावा कुछ होगा तो राइट नाउ आई कैनॉट कमिट ऑन दैट ना। अब टेक्निकल बैकग्राउंड से है, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना है, ठीक है। जैसे बहुत लोग ह्यूमैनिटीज से नहीं है, तो ज्यादातर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है दे प्रीफर ज्योग्राफी सब्जेक्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल साइंस ना, you study ह्यूमैनिटीज ऑल्सो, एक मिक्सचर है। तो वो थोड़ा ठीक लगता है कि हाँ चलो, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू आई मीन गो फॉर ज्योग्राफी, आई एम जस्ट सेइंग कि ये फैक्ट है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट को ज्योग्राफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा का पूरा ह्यूमैनिटी नहीं है, ठीक है। नेचुरल साइंस है, बहुत कुछ फिजिक्स भी पढ़ना है, थोड़ा केमिस्ट्री भी है ना, थोड़ा लाइफ फॉर्म्स भी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग ह्यूमैनिटीज पे सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी वो सब पढ़ रहे हैं। तो आई मीन योर इंटरेस्ट कीप्स ऑन आई मीन कीप्स ऑन गोइंग, मतलब देयर इज नो मोनोटोनी इन द सब्जेक्ट, ठीक है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है। तो रिगार्डिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट आई वुड सजेस्ट दैट इट इज better to zero down, it is better to at least decide the optional which you want to, right, which you want to pursue with, ठीक है। सब्जेक्ट का सिलेक्शन तो कर ही लीजिए, और उसके लिए पहला क्राइटेरिया यही है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इट शुड हैव आई मीन यू शुड हैव डीपर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, बिकॉज यू हैव टू रिपीट दैट सब्जेक्ट, यू हैव टू रिपीट द टॉपिक्स, मे बी सम टॉपिक्स यू हैव टू रिपीट फॉर 50-60 टाइम्स ना। तो अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो एक दो बार पढ़ के छोड़ देगा, तो दूसरे को देख के नहीं जाना है कि दूसरा क्या कह रहा है, ठीक है। just find your interest, whether you are inclined towards humanities or you are inclined towards a technical subject, मतलब आपका इंटरेस्ट किधर है ना, उसके हिसाब से। जैसे आई डिड माय ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक ऑनर्स, ठीक है, बट आई चोज ज्योग्राफी एज माय फर्स्ट ऑप्शनल, हिस्ट्री वाज माय सेकंड ऑप्शनल। ड्यूरिंग आवर टाइम वी यूज्ड टू हैव टू ऑप्शनल, दो ऑप्शनल लेना पड़ता था, समझ रहे ना। तो ज्योग्राफी वाज माय फर्स्ट एंड हिस्ट्री वाज सेकंड ऑप्शनल। तो अभी तो एक ही ऑप्शनल लेना है आपको, कोई एक चूज करो। यू हैव ऑलमोस्ट 26 सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय द कमीशन, यू हैव टू पिक वन, ठीक है। और जहां तक बात रहा कि ओवरलैपिंग ना, ये सब बात का कंसिडरेशन है। आई मीन सम ऑप्शनल सब्जेक्ट हैव good amount of overlapping with GS paper. Like if you have geography, so you don't have to prepare geography separately in GS paper 1, right? Because you have already covered that in optional, ठीक है। But that should not be the prime criteria. Prime criteria आपका interest है, ठीक है। रेस्ट बहुत सारा है, मेंटर है, स्टडी मटेरियल का अवेलेबिलिटी है, 50 चीज है, छोड़ दो उसको। पहला इंटरेस्ट अगर वहां पे ठीक है तो अदर थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ ना। हम्म। So during the year of all years program. So the course has Yes, very good question, very good question. We have already outsourced this ना, outsource करके हम लोग, we have a dedicated team ना preparing questions regularly and question based on the current developments, right? So you'll have a thorough I mean a thorough reading material, पढ़ने के लिए पूरा material मिलेगा, and then we'll have a related question to that, question from both mains and PT perspective, ठीक है। Current affair as such, I mean per se current affair is a subject mentioned in the PT syllabus, but current affair as such is not mentioned in the main syllabus, mains में mentioned नहीं है, ठीक है। फिर भी वहाँ current affairs को आपको करना पड़ेगा, because you have to update ना the developments which are taking place in the political sphere, the developments taking place in economy ना, तो वो अपडेशन तो हम लोग करके ही, मतलब स्टडी मटेरियल would be fully updated, ठीक है। अब जैसे मान लो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर जैसे GS2 और GS3 हमारा इस साल के एंड तक हो जाए, तो बाय द टाइम यू आर टेकिंग योर PT एग्जामिनेशन, उस समय तक तो बजट आ जाता है, इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, बहुत कुछ होता है ना। तो वो हम लोग उसका पूरा ध्यान रखेंगे, मतलब यू विल बी गेटिंग ऑल द मटेरियल, सॉफ्ट कॉपीज, एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। वीकली अफेयर है, वो अलग टीम उसका सप्लाई होता रहे, ठीक है, प्योरली फॉर UPSC, ठीक है। और अभी चल भी रहा है, आप लोग के पता नहीं आप लोग उस ग्रुप में हो या नहीं, सर्वस्या का एक जनरल इंफॉर्मेशन का ग्रुप है ना। इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, यू मस्ट बी सीइंग ना, हम लोग
अप्रैल से ही शुरू कर चुके हैं उसको, जस्ट टू मेक यू मेक यू कंफर्टेबल, मेक यू आई मीन रेडी फॉर दैट ना, कि इस तरह से हम लोग करंट अफेयर्स का रखने वाले हैं, ठीक है। हमेशा कांस्टेंट अपडेशन, कांस्टेंट कांस्टेंट शेयरिंग ऑफ दोज मटेरियल्स विथ यू, सो दैट यू आर नॉट ओवरबर्डन्ड बिफोर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर एक बार में करंट अफेयर प्रिपेयर करने बैठो तो एक साल का बहुत मुश्किल हो जाता है ना, आप कैसे और रिटेन भी नहीं कर पाते हम लोग। तो इट्स गुड टू आई मीन गो विथ दोज थिंग्स इन ए ग्रेजुअल वे, धीरे धीरे, वीकली, मंथली, और अपना प्रोग्रेस को भी आप टैकल करो ना। पिक वन न्यूज़पेपर, गुड न्यूज़पेपर ना, द हिंदू, और यू कैन गो फॉर द इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से एक कोई न्यूज़पेपर पकड़ लो, ठीक है। अभी तो ई पेपर मिलता है ना, पहले के जमाने में नहीं मिलता था, अभी ई पेपर है, यू कैन हैव दोज न्यूज़पेपर, यू कैन सब्सक्राइब ना। नहीं सब्सक्राइब कर सकते हो तो मुझसे लेना फ्री में ना, पीडीएफ में शेयर कर दिया करूंगा। एक वंस आई मीन वी हैव दैट व्हाट्सएप ग्रुप ना, तो विल कीप ऑन शेयरिंग दैट ना, दोज हु आर नॉट रेडी टू सब्सक्राइब। पर बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, बट इट इज वेरी वेरी आई मीन इट शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, डेली रूटीन का आपका पार्ट होना चाहिए। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हम लोग को इतना समय नहीं मिल पाता, फिर भी वी ट्राई टू रिमेन अपडेटेड, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको तो करना ही पड़ेगा, कोई उसमें मतलब इफ एंड बट नहीं, ठीक है। एनीथिंग एल्स? नो? Okay, thank you so much. We'll meet on 20th, day after tomorrow.